Very good morning to all of you. Respected Dr. Professor Rajesh Singh, University Librarian, University of Delhi, and dear participants. Once again, on the second day of this FTP, I welcome you all, and I welcome you, sir, Professor Dr. Rajesh Singh. And before introducing a brief of Professor Dr. Rajesh Singh, I would like to felicitate sir with a book, as it is tradition of Ramanujan College these days we are following. I invite Dr. Virendra Kumar to felicitate Professor Dr. Rajesh Singh. Well, today, sir will talk on strategies to enhance visibility, citation, and impact of research publications. And he'll share the very valuable information with you, as he's known for his work in this field. But before inviting him for his talk, I would like to read his brief in front of you. Dr. Rajesh Singh has had a distinguished career in library and information sciences, spanning nearly 3 decades. He has served in various prestigious institutions, including Sainik School, Purulia, Indian School of Mines, Dhanbad, IASC, MJP, Rohilakand University, before taking on a leadership role at the University of Delhi. As a transformative leader, Dr. Singh has played a pivotal role in modernizing the Delhi University library system. He spearheaded the development of the DUE library platform, ensuring 24 by 7 access to e journals, databases, and e books for students and researchers. He also led to redesign of the DULS website, integrating seamless access to digital archives and scholarly resources. His initiatives, such as the Information Literacy Program, have equipped students and researchers with essential information skills. Dr. Singh's contributions to the field have been widely recognized. He has received several prestigious awards, including the ILA Gitwani Deshpande Best Academic Librarian Award, the Best University Award by Colnet, Best University Librarian Award by Colnet, and the Research Excellence Award by Colnet, France. Most recently, he is honored with the Kola Best Librarian Award 2024 at the 70th All India Library Conference in recognition of his outstanding contributions to library science and modernization efforts at the University of Delhi. Internationally, Dr. Singh has represented India at various forums, delivering invited talks in Russia, Italy, Thailand, the Philippines, Germany, and the United Kingdom. He is also awarded the Erasmus Grant by Fiere University, Berlin, Germany, further strengthening academic collaboration. Beyond his library leadership, Dr. Singh has held key administrative roles, serving as treasurer and chairman of the governing body at Sri Aurobindo College, University of Delhi. A prolific researcher, he has authored 3 books, published 54 research papers in national and international journals, developed 4 course contents, and presented at 22 national and international conferences. His commitment to academic excellence and capacity building is evident in the numerous training programs, workshops, and internship he has organized for library professionals. So this is his brief. And I'll not take much time now. I invite Professor Dr. Rajesh Singh for his talk. Thank you. Thank you, Dr. Baby, Dr. Rajesh, and all the distinguished faculty members here. I started my career from Sainik School, Purulia. I am happy that from that school, although he was not a student during my period, but one of your colleague is from that school, and he is sitting at the right.
right? So that is Sainik School Purlia. I started there in 1995. Well, friends, today we have a topic: strategies to enhance visibility, citation, and impact of research publication. I believe you all need this, right? In which context? The context is very difficult, right? Enhancing research visibility, citation, and impact is something which is very difficult. But I would like to ask you one question. Why publish? Why an author writes? Can anybody say something? Because the author wants to be read and he wants to be recognized for his work. Simple. That API score and rest of the things are a different story. But the main story is he wants to be read and he wants to be recognized for his work. The next question is, you are an author and you receive a request for your research paper. Will you be happy? Yes, because if somebody reads your research paper, it is all likely that he may cite. And the entire game in research and publication is of citations. Who is important? A scholar in a subject who is highly cited is the best. He has the higher H index, right? A journal in a subject which is highly cited is the best because it has the higher impact factor, right? Because, and even it can have higher H index. So the entire game is of citations. And when somebody can cite you, when your research paper is read. And when it can be read, simply when your research is visible. So the story is very simple, right? It is very simple story. I will talk about how you can make your research visible. Once something visible, that will be read, and then there is a probability of citation. And once your research is cited, then only you are creating impact. Otherwise, it has no value. Now, what is the situation? 50% of research publications worldwide are never read, right? And 90% of what is read is never cited. Then also, I'm here to tell you what are the strategies to enhance the visibility, citation, and impact of your research publication. So, will I be able to give you some magic? No, no magic. See, there is no substitute for quality work. The first mantra is quality work. There should not be any compromise with the research work. If it is compromised, it is not going to be read and cited. Your research should carry out path-breaking results. It should produce path-breaking results, right? If it is theoretically very sound and if it could produce some usefulness, then only your research will be cited, right? And how you can enhance one simple idea here: try to publish more in open access. Let me tell you, uh, up to now we have an agreement with Cambridge University Press, right? If you are publishing in open access, you don't have to pay what the APC charges because we have an agreement of read and publish. Now, what could be some of the ideas which can help you? Even if your research is of quality, right? Even if your research is theoretically very sound and you are producing path-breaking usefulness results, then also the onus most of the onus
lies on the scholar. What for? For the visibility. You need to create the visibility. And once your research is visible, then only it will be read and cited. Now, some of the ideas, how you can create visibility for your research. The first idea is publish early technical reports. What it could be and where it could be published. It could be a very basic idea, a vague idea, a hunch, or anything not verified, not mapped on the standards of research. Simple idea which comes to your mind at 3 o'clock in the morning. Don't let it go away. Publish it. Where? There are multiple sites on digital platform. One example is ResearchGate. Now, what you are doing, you are publishing your very basic idea on ResearchGate, and then afterwards, this is not only important that you publish your basic idea, you keep on working with that idea. So what you are doing, you are developing a research paper online, creating a reader base starting from your basic idea. Say after 6 months or a year, that research paper is developed. It is complete. Now, during that period, you will have many observations, many comments, many criticism, right? And there is also chances that you may have some collaborators, and not from your department or from your country, from worldwide. So that creates a possibility starting from the beginning of idea till completion of your research paper, you have created an audience, those who have either criticized or contributed in the process of the development of your paper. Now you see, when you publish the idea, you start holding the copyright because you have digitally published, right? So nobody can steal it. The next idea is publish on more on global concerns. See, if your research is limited to a very local area or local concern, it is not going to have any global appeal and it is not going to be read globally and cited. There could be a case study on a particular entity, or say, for example, a tribe in India in a particular state. This is very local. But your review of literature on the tribes and your conclusions and findings and conclusions about the tribes should be global. It should not concern, see, that's a case. But your review of literature as well as your results should be global in nature. Publish more review papers. Any idea what is review paper? Okay. Any idea where you can find review papers? I don't know, I'm not sure, but we had access to annual reviews and it must be continuing. Annual reviews in every discipline or subject area. This publisher publishes an annual review annually, right? So in a review, it consists a review of all the research papers conducted in last 1 year. So if you have to start a research, annual reviews are the first point, the first thing which must be consulted to tell you what has already happened. Not journal, annual reviews. It's a title of a journal. There are multiple reviews under annual. Annual review is a publisher, right? See, why review papers are highly cited? Because they review the last year research. So if you want to create a highly cited paper, and believe me, it takes your experience, right? It takes a lot of time to review all the papers. But if you publish review papers, that will be definitely highly cited. Publish more in open access journals. We have already discussed this because open access provides
free readability to the users, and something which is free is highly used and highly cited. Yes. APCs are a big concern. We are working because now see, with the project of Government of India called One Nation, One Subscription, we have access to 30 publishers, e-journals of 30 publishers. Now we have sufficient money, and I'm planning to call them for discussion about how we can provide you the service of publishing free of cost, right? Uh, the next idea is seek comments of your colleagues before you formally submit for publication. What about this idea? Is it good or bad? Are you sure it is good? If you submit your research paper to your colleague from the same department, will it be helpful or you will receive criticism? Both are fine, but afraid that they might both are fine. They are also afraid of someone steal their work. No, see, once you are mailing your paper, है ना? Mailing, not giving in print. So nobody can steal it because there is a digital proof that you have mailed this paper. Nobody can steal it. Now coming to the criticism, critics are the best friends. So once they criticize, they contribute. Indirectly, they contribute. They criticize your paper and they contribute, right? And the last idea is use the digital channel more effectively. Digital channels. There are multiple digital channels. How you could be on the driver's seat by using the digital channel. And what digital channels are there? At every stage of your research and publication, there are multiple digital channels, from planning, researching, preserving, publishing, and distributing. At every stage, you have multiple digital platforms and channels which you need to learn and use it, right? Now, afterwards, we will talk about what different digital channels are there. So the first one is digital repositories. Not only your research paper, anything and everything which is related to your research paper must see the light of the day. That means it must be published. And there are platforms where you can publish different components of your research. So some of the archival repositories, digital repositories where you can publish. Then there are profile and networking sites like ResearchGate, Academia, LinkedIn. There are social sharing tools, Twitter, which has now changed to X, Facebook, and there are matrices like H-index, impact factor, I-10 index, and rest of the things. Your identity is very important. Where? Not in society, not among your friends, not among the scholars in your subject. Your identity becomes very important on the digital platform, right? So take my example. I have published a research paper when I was in Sainik School, Purulia. And where? In one of the most important associations of our country, right? From Sainik School, I have not come directly to University of Delhi. I have served many places, many universities. Same may be the case with many of you. So you have served different institutions and you have published from there. Depending upon the requirement of journal, you have written your name in different ways. Very simple. It could be Rajesh Singh or Singh, Rajesh, or R Singh or Singh, R. If the name is of two words. If you have longer name, it could be different. There could be different versions. For females, you have a surname, and when you get married, maybe that surname is added or changed. So you have worked in different institutions. You have used different versions of your name, and there could be a possibility of surname change. How the digital platform can accommodate all these things? How you could be verified
that you are the same person who was working at different places and who had used different versions of the name. How it can be done? So there are IDs, author IDs in Scopus, Web of Science, everywhere you have. And one platform which is common in Scopus as well as Web of Science and other indexing databases is ORCID, ORCID ID. You know what is the importance today of ORCID ID? If you don't have ORCID ID, you cannot publish, at least in topmost journals of a subject, because they need it, right? ORCID ID, it's free, no payment is required, and it is as simple as creating an email account. How? 3 steps. Register yourself, add your information, the details, and then use your ORCID ID. Once you have completed your details, educational details and your publication details, your ORCID ID is ready. Now, how it serves? When you put your ORCID ID with the publishers, they evaluate what else you have written in past. So ORCID ID serves as your academic signature, right? So please use, this is free. ORCID ID is equally recognized by Web of Science, by important journals of the world. The next idea, the next digital platform is academic profiles. How many of you have academic profile? Where? ResearchGate, ResearchGate, Academia. What? LinkedIn. What about Google Scholar? Hey? Are you keeping it updated? No. So what's the use? You know, that platform is very fast. The moment you press a button, you publish. So create an academic profile. That's wonderful. That will serve many purposes, I will tell you. But please do keep it updated. Your every publication must have a mention on your academic profile. It is not necessary that if your publication is not available online, you are not going to edit, right? Your publication may only be in print, but the publications who are citing your print publication may come online and they will create citation for your research. So please create a profile, academic profile. There are multiple tools. Google Scholar is one of the examples. You know, we are working on the, Google Scholar, and even Google Scholar you can use. And if there is a subscription based research paper, and if you are on DU IP range or you are using DU e-library, you can retrieve it, right? So we are going to work on that. But please create an academic profile on any of these sites, keep it updated, and use it as part of your email signature. You understand what is email signature, right? Just copy the URL of your academic ID and place it as part of your email signature. Now, how it will serve? See, 80% of time you are communicating with email with whom? Either with your peers or your seniors, right? 80% of your emails are addressed either to your peers or your seniors. Now, what you are doing by incorporating your academic profile in your email signature, you are creating 80% chance of your all emails for visibility of your research and publication. Because you are sending the academic profile link and that contains all the details which is updated in your academic profile, right? So this is one idea. Google Scholar is one such product which automatically generates your H index and I-10 index, which is nowhere available, I-10 index.
Here is a profile of a scholar, right? See how it looks. Your total citations, your citations from a specific year, your H index and your I-10 index. Are you aware what is H index? What is I-10 index? Sure. Okay. Now, the next idea is share your research output. I'm not talking about research paper that we know we always share with, when we publish, we share it. But there are many other things like which you need to share, which is part of your research, but which is never published. And where you can share, Open DOAR is one such site. And here are some of the examples. See, this list is only indicating. There are multiple sites, multiple platforms on which you can share the information which is not published from your research. Slides you can share on SlideShare. Even you can find this PPT on SlideShare, right? You can find many other PPT on SlideShare. I have not shared, but they do indexing. F1000 Research, it's a very wonderful site for life sciences. GitHub, these are only examples. It's a platform for softwares where you can share your softwares. Engage in networking communities where create your profile, showcase your publication. So you need to engage in networking communities. So a fine day, I have got my research published in one of the important journals of our country. I'm not saying the topmost journals, right? Now, what should I do? Should I download the paper and share it so that my friends, my colleagues, they can see it and they can appreciate? The better way is just share a snap of your paper or basics of your paper along with the link. You know how it will help? As many time as this link is opened, you will have a count how many times this paper has been downloaded. Beyond H index and impact factor, there are other metrics which also consider the number of times your paper has been downloaded, right? And number of times people have reviewed it or seen it or commented on it, right? So engage in networking communities instead of sharing messages. Do share your paper. ResearchGate is one such site which provides you RG score. So this RG score is not only for citations. It is also for your engagement in research communication. What is that engagement in research communication? How much you are reviewing others' paper, how much questions you are answering, right? Everything, how much request you are addressing, request of supplying the research paper. So everything is counted in ResearchGate. Those who are not having this profile, please create your profile and take the help. Mendeley. आता है? Jotaro, it doesn't matter. You either use Mendeley or Jotaro. What are they? They are reference management tools, right? And they relieve you from rewriting what? Rewriting the references of your research paper, which was not published in one journal, but you are trying to submit in other journal. Right? Now the question is, friends, the question is, suppose, given a chance, where would you like to publish? Top 5 journals, top 10 journals, top 50 journals of your subject, or the journals which can easily accept your research paper? Which can easily accept. Why? Because you want to increase the number. Okay, if I ask you, how many of you
would prefer to publish in top 10 journals of your subject? One example. 2 years back, I stayed a paper on a football journal that is journalism. It almost took a 1.5 years for me to get that paper published. In between that time frame, many times they have to revert my paper to make the necessary changes. They also have to do some queries, which are responded. And the changes were made, the paper got published. So then I believe last on the 2 of July, I got a mail from them and the years of documents were sent. After that paper was in published, obviously I was working on another topic and I sent a very fresh article because I see that the courses are not First paper was published. Now, that's right. now, the point is being that is a journalism history. Now, this kind of understanding I have developed because when I have moved this paper this time in my discipline, the journals which are of my discipline, they never respond. In fact, one of them responded marking after 6 and 7 months back with marking that there is some confusion over the title, so he cannot publish it, and so on because was the reason. And the another one market that first tell us that whether you have applied it somewhere else or not. Now after 7 and 8 months, if you are not even getting any response, obviously I would be keen to send it somewhere else, and I did that. So being an honest, I responded yes, I did, and they cancelled it on that ground. So somewhere that problem is being there. If you are trying to publish in top 10 journal of your subject, you will have to be paid. It takes at least more than 3 years. The point is being the first journalism of history. I don't know what they included, but the point is being they responded in a gap of 2 to 3 months. But when it comes to my discipline, journalism and history, where obviously I do not want to make an editorial board because then it is actually found out that which laziness or like attitude there. The point is, after 7 months, you have been suddenly wake up and then you have been asking after going on to AI. I'm on time. I'm on time. Yeah. So what time is left for me? अब मैं आपको अभी तो ये तो अभी का हाल है मैं आपको 10 साल पहले वाला भी हाल बता देती हूँ I never even got a reply from ICHR that whether the paper is accepted or rejected. See, I'm talking about top 10 journals. Those who are more professional. See, why something is stopped? Because they are more professional. They are handled by professional person, right? My idea is, see, submission of your research paper in top 10 journal is itself a learning experience. You will learn how to write the review because they require it in a different way, not just simply introduction and the literature and some things, right? So what you are writing should have a purpose and why, what items are required for submission, you will learn this first. Second is, if you are lucky, right, and your paper is accepted for review, that will be further learning and this is nowhere taught. Nobody teaches you how to submit and how to write a research paper, right? How to review a research paper. If you get comments from reviewers, it's a part of learning. And believe me, if your 4 or 5 papers are accepted for review, whether they are published or not published, it doesn't matter. If they are reviewed, 4 or 5 papers are reviewed in top 10 journals of your subject area, believe me, if you have confidently addressed to all those reviews, you will become a good researcher and good report, right? It doesn't matter if those papers were published or not, right? So in that case, take for example that all your papers were rejected. Even though, if you have confidently addressed to the reviews, you have learned a lot on how to do research and how to report research. And believe me, if you are submitting your research paper from there to any of the top Indian journals,
It will be everything. Doing research is something different. Reporting research is something different. Publishing research is further something different. Right? And then you will have to market your research. There are ways and means which I have discussed with you, but you will have to market your research. You cannot expect from the public that they are not going to market your research, not the editorial team. Then who is left? It is you who is supposed to market your research if you want credibility. Now, you told me you know agents. What it is? Suppose there are 20 people and 15 of them have 15 citations, those 18 them. 15 of them have at least 15 citations. There could be more factors, right? So your attendance is 15. What is impact factor? We can apply H index to individuals, to journals, to departments, to institutions, to a country. Let's see. Then everybody can answer online. Okay. You can apply H index to an individual, to a department, to an institution, to a country, right? It can be calculated. But impact factor is only for journals. And friends, most of you must have received various mails that this is a journal with this high impact factor and they are inviting research papers for publication. You will have only to pay 2,000 or 1,500 rupees as APC. Don't believe that. Right? No impact factor is inviting anybody. What is impact factor? It's a proprietary item of Web of Science. And Web of Science indexes only around 13,000 journals. So only those 13,000 journals are having impact factor. Only those 13,000 journals are having impact factor. If they are not indexed in Web of Science, if they are not part of JCR, Journal Citation Report, they are not having any impact factor. Now, how you will identify from where you will get the list of JCR? You may not get the list of 2025, but in Google itself, if you type JCR 2024, the complete document will be available. There you need to find out the journal which is inviting the research paper is part of that list or not. That will help. Right? Now, any question from your side? They have some? Text. No, they want you put your name. ऐसे भी ऑफर्स आते हैं कि हम आपको अपने रिव्यू टीम में या जर्नल के एडिटोरियल टीम में शामिल करना चाहते हैं. संभल करके रही. हाँ. See, if you want to do research and if you want to publish, I told you, 50% of research publication is never read. Now I'm going back. You know why? Because of all those things. 50% are never read and 90% of what is read is never cited. So you have a scope, if you want to get citations, you have a scope of 5% only. Right? Anybody else? Okay. Thank you. Thanks for inviting me. Thank you very much. Yeah, thank you, Dr. Rajesh Singh, for this very informative session. And I think आप सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इसके ऊपर. But in my opinion, like it's an ocean, the research, and there is a need to dive very deep
into it. As we are observing these days, so many things are there. How to prepare your manuscript for beginners, how to submit, which is the right journal where you have to submit your manuscript, and lot many things. Sir ने बहुत सारी चीजें बताई, but as our head of library systems, I just want to inform you that very recently I went in Flipnet, Gujarat, and as we uh, want to create the Vidwan IDs, I was sending requests to the faculty members, please create your profile, but receiving very few. But I requested them and sent the entire data to InFlipNet team. They have created, and right now we have the Ramanujan RNS platform also, and we have sent the Vidwan IDs to each faculty member. So we have done this from library side. Now they have to maintain their profile, because we as a librarian, I really don't know what they have to put into their profile. But right now we are on RNS also, and we have a very good number of papers on Scopus also. Right now it is 222 with 56 authors. Yes, sir. Sir, continuously we are sending the things, like मैं समराइज करके भी भेजती हूँ कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, और बच्चों को सर हमने ऐप जो मोबाइल में है वो सारी चीजें हम लोग, इवन सर मैं, अगर आपके पास टाइम है तो मैं दिखा भी सकती थी आपको, बट आई थिंक आपको कहीं जाना है। हम लोग अपनी स्क्रीन में डेली चीजें चलाते रहते हैं कि ये ई लाइब्रेरी है जी। Last 1 year, for 1,45,000 e-books, we have got 16 lakhs download. It's a good thing. More than 5 times compared to the print. And books are 18 lakhs in number, print books are 18 lakhs in number. They are used for 3.5 lakh for a year. And e-books, either complete book or book chapter, they have been downloaded more than 16 lakhs times. So once again, on behalf of Ramanujan College and the team of this FDP program, I thank you, sir. And for you, for the faculty members, if you face any kind of problem in research, like preparing manuscript where you have to submit, as there are many platforms. So I'm always here. Anytime you can approach me if you have any problem. Thank you. Thank you very much, Dr. Rajesh, sir. For students, that in any being told here, they have to do the self-writing or so suppose they are writing dissertation or so if they are willing to publish that, so what are the best platform they can take? This is a wonderful question. Actually, I was in hurry. I was late, so I was in hurry. I could not tell you. This is good service. Thank you. No, I was in hurry in my mind. I was not. See, what we have done, this is very important for the University of Delhi as a whole. Now, what we have done, we have started a platform, PUP. Okay, so what? So this is a very good question, where to publish. Now, as a library, what we have done for the entire university, we have created a platform. And this platform is on the line of Cambridge University Press and Oxford University Press. We have created a platform, Delhi University Publishing, right? And by now, about 15 journals, either they are published from the departments or from the colleges. They are indexed or they are brought online, right? So everything from submission of research paper on international standards, submission, review, rejection, acceptance, and publication for those journals will be online. So we are trying hard that all the journals from different colleges, different departments, we place it online. So the first purpose is to provide a platform to our scholars to publish. And then later on, the main purpose is
to get most of the journals indexed in Scopus. So first criteria is the journal must be available online. The journal must be systematically being published. There should not be any delay. And then there are further criteria on which we will develop the guidelines and provide to the journals. So if your department, your college is having any print journal, it can be brought online, and that's a platform where they can publish. Sir, you need to level takes maybe in our case in that takes it will take 1 year or 2 years. It's an international standard. Yeah, but the thing is that in that case, journals will be responding quickly because they don't have so much time. 2 or 3 months. See, we cannot guide the international journals that we have started NEP and the students need to publish. So in that case, the students can start with the Indian journals or the journals which are being published from university departments and colleges. One more question in this regard. If you see the whole college, maybe some 100 or odd research papers will be publishing every year. Maybe not more than this. So when we expect that is going to be publishing this focus next year. See, journal or platform or publication is not very difficult. The most important is you should maintain the quality of the research which is being published. Not it is because it has to be published for degree, it should be published. If you maintain the quality, you can start n number of journals without spending single penny. On our platform, n number of journals can be started. You have your own editorial team, you have your own reviewer team, everything your own. You have your own ID and password to maintain your journal. We provide the platform, which is free. We train you and you can start a journal, right? But please be sure that you maintain the quality of research which is being published. That is most important. हमारे स्टूडेंट्स को पब्लिश करना है, जरूरी है, इसलिए पब्लिश कर देंगे, ये नहीं. स्टूडेंट्स को उस स्टैंडर्ड को लाना पड़ेगा. Then you go for dissertation. Only those who are good in quality, they will get published. Otherwise, dissertation will be there. Dissertation will come from for some cases studies. So start new journals. See, the purpose of fourth year being a research year, the purpose is to get the students towards research more and more. Any guidelines there from university to the central library operations? No, this is our initiative. We have started this keeping in view the importance of journals being indexed in Scopus and a platform for students to publish. Sir, one last question that in between told us that Cambridge University the missing free. So this is for every college of university. So n number of research paper can be published. We have to inform them. No, you have to submit. And when you write your name, you will provide your institutional affiliation. So they will automatically send it to me for verification that he is a scholar from University of Delhi. So we verify and it gets published. And some of the most of the times even you may not be aware, but in some cases it comes to you also. Scholars and faculty members also. Anyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Are you right? Sir. Sir, it's
We have 20, there is 20 minutes break and then we will start at 11:30.
Thank you, sir. मेरा रोल जो है बैठ गया
Yeah.
Good morning, everyone. Uh, for the next session, we have amongst us Dr. Devesh Birwal, who is working as an assistant professor in the Department of Economics, Delhi School of Economics, University of Delhi. He has over 9 years of teaching experience. He has published many research publications, and his primary research interests include agricultural economics, microeconomics, and applied econometrics. He has published scholarly articles in reputed journals such as Indian Journal of Agricultural Economics and has co authored a book titled Livestock and Poultry Holdings in India and Intertemporal Comparison. He has also contributed a book chapter on climate resilience among rice farmers in Odisha. He has also won the Best Paper Presentation Award at the 77th Annual Conference of the Indian Society of Agricultural Economics in the year 2017. He has been actively involved in academic training and capacity building and has conducted workshops on softwares like SPSS, Stata, and R for students, faculty, and researchers. He has earlier been engaged with Planning Commission, Institute of Applied Manpower Research, and the Foundation of Agrarian Studies, contributing to projects on informal industry, rural livelihoods, and agrarian structures. Welcome, sir. And he would be talking about research essentials, tools, techniques, and methods today in today's session. Now, I would like to request sir to come up and Dr. Jyoti Kushwaha to facilitate, sir. Sir, please. Thank you so much. Today we are going to talk about the research methodology. And as I got to know that our audience here is also students as well as the faculty members. Fine. So this is now very important for students. Why? Because we have a fourth year plan, and as well as faculty, because we need to evaluate their thesis. We need to help them in their research. We have to basically somehow we are also conducting that research with them. So that's really a joint work as a faculty and the students now in the fourth year plan. So that's the you can say a beauty of the NEP, that somehow that bringing the research among the students, the undergraduate students. Fine. So, but when you are planning to do research, you have to understand the proper process and the methodology behind doing research. It's very important, because if you start doing a research without any process and scientifically method, which we want to follow, so that research might be a prejudice, or maybe that have no authenticity in the word, or in the real things. Fine. So I have made a very basic PPT here about the entire process, what we need to follow when we do a research, and it's a very helpful if you teach that in your the curriculum also, when you want to give them feedback of to your students. So fine. So first of all, what is research? Research is redefining some problem, some thoughts, some the problem. When I'm talking about the problem, it's a research problem. Fine. So maybe that is also a behavioral problem that comes under behavioral studies. But yeah, that is a problem which is there in the society, which is there in the economy, which is there in the politics, which is there in the any kind of field, or maybe in the science.
Fine, you want to evolve or you want to get a new medicine for COVID. Fine. So, but you have to see how effective that is. Fine. If you give that vaccine, how many, how percent chance is that that will be effective for the persons who are getting the benefit of that vaccine. Fine. So that's and that should follow the some process, and you should define some hypothesis. Hypothesis is what we'll talk about in brief, but in general, it's a statement which you test through certain process. Fine. You made some statement about your problem, whether it is affecting the economy, whether it is affecting the society, whether it is affecting or not affecting the outcome. Fine. So why you want to do a research? What is the there is a slight problem in the maybe the when we bring this format in your computer, some fonts are changing. So I want to excuse for this. Fine. But you can read it. It's objective. Fine. So it's not that if we read a PDF, I'll go ahead, and if there is a problem, I'll share the PDF as well. Fine. So in PDF, it's not a problem. Anyway, so what is the objective of doing a research? To, first of all, very basic, to gain some degree, to obtain some degree, to get some degree. Whether it is now when we are talking about the undergraduate level, the fourth year. So if you want to do a fourth year, then you need to do a research, and then you will get a degree on the for that, or even master's thesis, or MPhil thesis, or PhD thesis. Fine. So finally, you get the degree. Second, you will get basically the other things about it, and okay, sorry. So why you are doing research? What is the objective of this research? To gain a familiarity and phenomena to achieve a new insight. So basically, maybe you know that if farmers are using some type of pesticide, it is previously known that it was failure. But now the things have changed. The soil type have changed. The moisture level has changed. The temperature has changed. Now you want to retest it, whether that the same fertilizer is effective or not effective. Fine. So it's not always that if somebody has done that study, it's not useful to do it again. Fine. Maybe that person has done in a different scenario, different time period, different atmosphere, different state, different country. Now you want to test it. That one study, if it is done in the US, is it really replicable in the US or not? Sorry, in India or not? Fine. So, but we usually ignore, or we don't want to do a research in an area which is overdone. Fine. Because there is very little scope to get a new outcome out of that, or new insight out of that. Fine. So to portray accuracy and characteristics in particular individual situations or group. So accuracy. You as I had given one example of the COVID vaccine. So accurately, you want to say that, okay, 70% or 80% chance is that if a person is having the COVID, will be either no effect on it or very minor effect on that person of that COVID if he or she gets a vaccinated already. Fine. So uska impact kam ho jayega. So to determine the frequency, kitna frequently, and if is very frequently getting in connection with the COVID person, how much effect he will get. Maybe if he is frequently connected to the COVID, for example, I'm a doctor. Fine. And I am vaccinated, and one teacher is vaccinated.
Fine. And one person who's doing a work from home, that person is vaccinated. So that person who is in the home maybe is very less frequently connected with the outsiders. And teachers are again connected with the students, but with a very less chance of that persons or the students are having the COVID positive. Or in the third case, the doctors who are very frequently connected with the persons or patients who are either having the COVID or the similar kind of virus or other virus. Fine. So that in that cases, maybe the all three cases, if I'll give them vaccination, maybe effect is different. Fine. So all those things we can evaluate with the help of this. So motivation, the earlier I was talking about the motivation, you will get a degree, you will get a joy of if somebody now if we talk about the person who have who have given us this vaccine, so we can give his name definitely, or somebody, for example, somebody has done Birthal in my agriculture. If I'll talk about the Birthal or Ramesh Pal or Ramesh this thing, so these people have a good name. Why? They have given lots of theory about the agriculture innovation. Fine, how the agriculture can be good in a different this thing. So your name, your fame, your degree, your intellectual joy, all these things are motivation of doing research. Fine. So what is the criteria of good research? If you want to do a research, that should be systematic. What is the meaning of systematic? It should follow the proper process. It should first you'll define the problem, then you go and search a literature and read a literature, and with the help of literature you design your research hypothesis and all those things. So that should follow certain process. It should be systematic. It should be replicable. आपका process इतना clearly define हो that anyone can read do that research and cross check that कि आपका जो outcome था, is it really that the case, or you have just fabricated that results. Fine, one person maybe fabricated that result by its own. Fine, survey primary survey मैंने किया और मैंने कुछ भी उससे portray कर दिया. ठीक है, कुछ भी दिखा दिया अपनी तरफ से. But if another person will do the same survey and cross check that whether I am getting the same result or not, and then I can criticize that first person that he might have done this problem. His variables may be the omitted variable bias, or that's a terms in the economics. But जो भी इस तरीके के कोई भी प्रॉब्लम उसमें है या हम लोग उसके ऊपर बात कर सकते हैं ना. So it should be replicable, logical. Fine, it should be logical. ऐसा नहीं कि मैं तारे count कर रहा हूँ and I will say that okay, we'll count a star and we'll say if you are in Delhi you will see lots of star, and if you are in Hyderabad you can't see the star. Fine, it's just a illogical statement I'll say, and I'll count it and I'll write a report that okay, in Delhi I'll have more stars than Hyderabad. Fine, so it's not a logical. So that should be done either with some scientific method. Fine. So logical studies, empirical, it should be through some data, some support of literature, some support of the quantitative things. Fine. So that's the empirical thing. Now, in a different process, what kind of research we'll do? If we talk about at undergraduate level, very basic thing we can do. We can suggest them to just cross-check some literature and cross-check some very basic descriptive analysis they can do. They can check the frequency, they can check the how many people are educated, uneducated, with a different income group, with a different social group, with a different religion, lots of these things. Fine, very basic thing. And then if you are talking about the postgraduate level, then we should talk about the national and international relations. And then whatever the study we are doing at the Delhi level, we have to evaluate that research with the help with the understanding of the entire nation. If it is there in Delhi,
whether if somebody is doing that research in Delhi, is it really we can analyze that for entire India or not? Or we can analyze this as when we want to compare India and China or not? Fine, like that. So so at the PhD level, it will be more vast than the graduate level. So it will basically add more and more process and the more and more methodology if you go in the type this thing. So type of research, one is the very descriptive research, which I was talking about, just taking the numbers, frequencies, and mean and median and all those things. You are not checking the causal effect. Fine. In descriptive, you are not doing a causal effect. It's just a frequency plots and all those descriptive type of work. Then analytical research, here you are doing a causal effect. Fine. Or regression or correlation and all those things. And then applied research, you want to see a solution-based research. Fine. If you want to do this, whether you will get this or not. Fine, like solution based, applied. Fundamental research, which is based on some theory, which you want to test that theory, exact theory, whether it is there or not. Quantitative research, it's you can see the with the name itself, it's a quantity. So it talks about in the number, in the numerical terms. Fine. Qualitative is maybe group discussion and all those the case studies and the qualitative research and conceptual research and empirical research. So this is the type of research, and here we have an approach. So in one research, you can have the either of these three approach. Either you have a all quantitative approach, or you have a all qualitative approach, or mixed approach. Fine. Mostly in the nowadays the mixed are more popular and more there. But recently, I have done one project with the ISSR on the Ayushman Bharat. So there, I have evaluated. I have surveyed around 2,200 households. So first, I have done the all empirical the evaluations and regression and all those things. And similarly, at the same time, I have also done a group discussion. I have also done the case studies. Fine. If one person who was denial for the Ayushman, why, what was the case, how it was happened. For example, maybe that illness was cancer, and the hospital refused because it takes too much of cost to treat that guy or person. Fine. So they refused it. Or maybe cataract case. So in cataract case, they'll give a partial refund. Fine. Why? Because the cost is given by the government is for the some substandard material, which is not the quality material. So they'll cover that difference from taking money from the individuals. Fine. So like that. So lots of the cases are also there in that reports. Fine. So both things. So you have a both approach. So this is the entire process I was talking about. So first you define your problem. You define your problem that, for example, I am talking about the Ayushman Bharat. So I'll define that whether it is the Ayushman Bharat is actually beneficiary for the lower income groups, or for the women, persons. Because if you see the previous insurance scheme from government, that was giving the 5 lakh capping, or sorry, 5% from the household can get a treatment with the help of that insurance only, which is not the case in the Ayushman Bharat. So earlier, maybe if you have a bigger house, or like a more person in your house, maybe 8 or 10 persons in your house, so maybe the women's are not able to get the chance to get treatment. Fine. Or only the productive treatments they are getting.
Fine. So that's the situation and with the earlier scheme. But in this scheme, you can get a treatment of 10 people or 12 people. So every person can get a treatment, but the with the capping of 5 lakhs. So again, some limitation is still there in this case. So like that. So you can see, define the problem, and then you read lots of literature about that issue. So maybe whatever you want to do it is already done by so many people. Fine. So you have no scope, as I told you, you have no scope to do further research. So you have to check that. Then, okay, you have gone through with the literature and lots of other things. Now formulate hypothesis. Fine. As I said that hypothesis is one statement. Fine. I'll talk about in detail in the next slide, but it's a statement. Then you design research. What is designing a research? You will see where from you are taking data. It's from secondary sources or primary sources, and what will be your sample, what will be your population, how much sample you will collect, how you will collect that sample. It's snowball sampling, it's random sampling, it's whatever the lots of the other thing. This is also comes from the literature review. Fine. So research design, then you will collect data, either secondary data or primary data, you will collect it and then analyze that data or test hypothesis, whatever you have framed. And then if again you have not satisfied with your result, so you will go back to the level again, design your research again until you will get the final result, which is satisfactory result for you. Fine. So then interpret and report it. Report it in terms of report, report it in terms of articles, report it in terms of anything. Fine. So that's the process. So first of all, defining a research problem. A research problem in general refers to the some difficulty which a researcher experiences in context of either a theoretical or practical situation and want to obtain a solution for the same. Fine, this is the research problem. Subject which is overdone should not normally avoided. Fine, because very less scope of getting a new outcome, and maybe the methodology they are following, it's already taken all the type of variable or all the type of methods which can be evaluated. So you have no scope to introduce a new method or new idea, new thoughts into it. Fine. So even if somebody have done the previously research, you can do a research, but by just changing some insight out of it. Fine. So maybe previously the person have done research for women. Now you want to say that you want to do a elderly woman, or you want to do a the women's who are in the productive this things age or other area. So it may be a different than the previous, but are differently examined. So there must be some objective to be attained. The subject selected for research should be familiar and feasible. As I told you, it should be feasible. ऐसा नहीं तारे काउंट करना शुरू करना है ना, नहीं वो नहीं करना है. Okay. So literature review. So literature review is a comprehensive summary of the previous research on a topic. The literature review survey scholarly article, books, and other source relevant to the particular area of research. No, normally we avoid newspaper article. Fine, we all know that it's somehow fabricated. So we usually take articles, books, and the some reputed websites, maybe World Bank site or those or Government of India ki website, Planning Commission, Niti Aayog, and lots of other the similar kind of thing. Fine. So question that can be answered from review. First of all, the exact hypothesis you can define from your literature review. Fine. So what you want to test, and problem you can define. Of course, the broader problem you have come with in a beginning, but you can define the exact objectives and the problems and the hypothesis with the help of this. Also, you can
get a proper methodology with the help of literature review. Fine. What variable you should test, how you should test, and also the sampling method, the state in which you want to do it, or country in which you want to do it. That the basically research area and the broader all those process you will get with the help of literature review. So all these questions you can get an answer with the help of this literature review. And the sources, as I told you already, the books, journals, international organization document, vital statistics, media, internet, and past dissertations. So if somebody have done already this research, their dissertation on Shodh Ganga is there. Lots of other, you can see the websites or library where you will find the dissertations. Fine. Formulate the hypothesis. So after an extensive literature survey, research should state the clear term of working hypothesis. For researcher, hypothesis is a formal question that is he intended to resolve. Fine. So that's a clear statement that if we provide the education that will eradicate the poverty. Fine. So the education is helpful to eradicate poverty or to overcome with the poverty. So maybe it's a very clear, but again, it is different for male and female. Fine, it is different for maybe a person living in the very poor states and very developed states. Fine. So maybe we want to test the different things also. So like that. So hypothesis should be very clear and precise, fine, capable to being tested, and limited in scope, and must be specific, as I told you. So if you are very specific that the poverty is the education will help to eradicate poverty, but maybe it's not it's not uniform for the different states. Fine, like that. So introduce some the state differences also, or across states. Fine, it's not uniform across states. The impact of education on eradicating poverty is not uniform across states. It may be your hypothesis there. This may be your hypothesis. If you want to see the impact of education on poverty across states. Fine. So like that. So must actually explain what is claimed to be explained. So all those things, hypothesis testing. So in hypothesis, we have two basically hypotheses. One is the null hypothesis, which is generally denoted by the H naught. Fine, H0. Zero is called naught. And the alternative one is the HA. What is that? H alternative. So mostly we want to accept the H alternative. Fine. So we basically frame our hypothesis in a way that the null hypothesis we want to reject. So here, if we want to say that the impact of education on poverty is not uniform in this, so we will say it's uniform across states. Fine, fine. This is the null hypothesis, and we want to reject it, that it's uniform. It's not uniform. Fine, it's not uniform for Bihar, it's not uniform for Jharkhand, it's not uniform for Mumbai. Fine, because in Mumbai, the infrastructure is different. In Jharkhand, the infrastructure is different. In Noida or Gurgaon, you have lots of call center. Even a graduate will get a job. Fine, but in Jharkhand, even PhD is not getting a job. Fine, so it's not uniform. Fine, like that. So so null is this. So you'll reject it, and you will test with the scientific method, T table and all those things. I am not going in that detail because nowadays you can test your hypothesis is very generally with the help of software. Fine, and you can very easily read it with a p value or that value. If it is significantly coming, then you can say, okay, you are rejecting your null and accepting the alternative.
So nowadays, even the you don't need to go in lots of details. Okay. Yeah. जो करना चाहते हैं हो पाए ये जरूरी नहीं. हमेशा ऐसा ही होता है, मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि हम नल हाइपोथेसिस बना रहे हैं, वो तो हमारे ऊपर है, बट जनरली जो थियोरेटिकली कहा जाता है, नल इज वाई नल, नल इज विच वी वांट टू रिजेक्ट, ठीक है, और अल्टरनेटिव विच वी वांट टू एक्सेप्ट. ठीक है, अगर आप इसको उल्टी तरीके से लिखोगे तो बेसिकली जो रिजेक्ट नहीं हो रहा है आप कह दोगे ठीक है वी आर एक्सेप्टिंग नल. तो इफ यू एक्सेप्ट नल एंड यू विल से दैट poverty, the impact of education on poverty is not uniform, that's your null, and you accept your null. Okay. It also depends upon the data collection also. नहीं, हाइपोथेसिस को अगर आप नल और अल्टरनेटिव को एक्सचेंज कर रहे हो तो इसका डाटा कलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इट्स सेम फॉर कीपिंग वन इज नल एंड अदर इज अल्टरनेटिव और अदर इज अल्टरनेटिव एंड दिस वन इज नल. So because data is same, because even the result is same. फाइनली जब आप उसको इंटरप्रेट करोगे तो आप यही कहोगे कि अक्रॉस स्टेट इट्स नॉट यूनिफॉर्म, वेदर यू एक्सेप्ट नल और यू रिजेक्ट नल. ठीक है, बिकॉज आपने पहले में जब रिजेक्ट करना था तो आपने कहा कि यूनिफॉर्म होता है. ठीक है, तो यूनिफॉर्म नहीं होता है तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया. दूसरे वाले में कहा आपने यूनिफॉर्म नहीं होता है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया. तो आपने बेसिकली इंटरप्रेट क्या किया, यूनिफॉर्म नहीं होता है, वही रिजल्ट आपने यहां दिया, वही रिजल्ट आपने वहां दिया. लेकिन फॉर हैविंग अ यूनिफॉर्मिटी बिटवीन ऑल ऑफ यू, fine, it is defined in the way that null is always framed as to reject it. Whatever you want to reject it, you will frame that as a null. But ऐसा जनरली नहीं, हमेशा नहीं होता है. कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि नल वो कर देते हैं जिसको वो रिजेक्ट नहीं करना चाहते, तो इट्स ओके. और इवन ये भी केस होता है, वी वांट टू रिजेक्ट नल बट वी कैन नॉट, we don't have sufficient data for this. Fine, it is also the case. We are saying that okay, it's uniform and we cannot reject that null. So we have to somehow, and when we are not rejecting, because it's a theoretical, when we reject a null, so we have clear evidence that okay, this is not the case. But when we do not reject the null, that doesn't mean that we are accepting it. ठीक है, क्योंकि do not reject and accept is not the same here. Do not reject means we are not rejecting that case because we are not getting a sufficient evidence. Maybe मुझे नहीं मिले, आपको मिल जाएंगे. जब मैंने सैंपल लिया, मैंने बड़ा बायस सैंपल ले लिया, सारे मैंने टीचर्स ले लिए. ठीक है, अब सब टीचर्स की तो इनकम सेम है. अब मैंने सारे टीचर्स ले लिए, सबको 1 लाख 1 लाख 1 लाख मिल रहा है. ऑफ कोर्स इफ दे आर MA एंड नेट, they can get a chance to get a teaching job, and if they are not MA and net, they'll not get a chance to get a teaching job. Fine, and now I am testing this case, so it's uniform, somehow it's uniform, and that is because my sample is biased. I have not taken the representation of entire population. Fine. So in sampling, I should, when I am interpreting, and that's my next slide. But whenever I want to interpret my result in terms of population, I must and I should taken care of this thing that my sample should be representative of the true population. And what is population? For example, मैं कह रहा हूं कि पूरे इंडिया का केस, तो इंडिया के हर स्टेट से मेरे पास होना चाहिए, हर तरह के ऑक्यूपेशन का डेटा होना चाहिए, हर तरीके के स्लम से भी हो, मिडिल क्लास फैमिली से भी हो, रिच पर्सन से भी हो. तो जितने तरीके के लोग इंडिया में हैं, मेरे पास उन सब का सैंपल होना चाहिए. ठीक है, तो अगर मैं उन सब का सैंपल ले पाऊंगा, उन सब का अगर मेरे पास कुछ चांस होगा, तो देयर इज वेरी फ्यू चांस. बिकॉज जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्ट करें सब, तो प्रोबेबिलिटी के सेंस में मैं बाहर जाऊंगा बारिश हो जाएगी. ठीक है, कोई 100% चांस तो नहीं है. मैंने देखा बाहर, अच्छा बादल हैं,
आज मॉइस्चर भी ऐसा है, सो आई कैन प्रिडिक्ट, एंड दैट प्रिडिक्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ माय पास्ट एक्सपीरियंसेस. इट्स नॉट कि मैंने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है. मैं प्रिडिक्शंस कर रहा हूं तो मैं ये देख के कि भाई ह्यूमिडिटी लेवल क्या है, टेम्परेचर क्या है, बादल है या नहीं है, बादल काले हैं या नहीं है, लॉट्स ऑफ द फैक्टर्स. ठीक है. तो इसी तरीके से जब हम रिसर्च करते हैं, तो जब हम किसी फाइनल आउटकम पे पहुंचते हैं, तो वो सारी चीजें जो हमने टेस्ट की है उनको देख के पहुंचते हैं. ओके. मैं नल को रिजेक्ट करना चाहती थी, लेकिन जब मेरा फाइनल डाटा को कलेक्ट करने का जो आउटकम आया, उसमें जैसे अभी आपने बताया कि वो नल को रिजेक्ट कर ही नहीं पाए. हाँ, तो इसीलिए इसीलिए उसको इंटरप्रेट जब हम करते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया. हम ये कहते हैं वी हैव नो सफिशिएंट द लिटरेचर एंड डेटा, ठीक है, टू रिजेक्ट आर नल. ठीक है. सो इन दैट केस वी कैन नॉट से दैट द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन पॉवर्टी इज नॉट यूनिफॉर्म. ठीक है. हम ये नहीं बोल पा रहे, बट हम ये नहीं कह सकते वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि हमारे पास उसका भी डेटा नहीं है. ठीक है. तो हम वो नहीं कह पा रहे, वो हम नहीं कह सकते हैं. या अब इसी में, सॉरी, मैं एक चीज को आपकी बात भी अब जब बोला तो मैंने, अब इसमें प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप नल को अल्टरनेटिव बना देते हो और अल्टरनेटिव को नल बना देते हो, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है. बिकॉज आप यहां पर अगर मान लो सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलते आपको इसके लिए कि आप नल को रिजेक्ट कर पाओ, तो आप ये कह रहे हो कि इसका मतलब वो यूनिफॉर्म है. वो नहीं कह सकते आप, बट आप कह रहे हो यहाँ के इस केस में. तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम नल वो बनाते हैं जो एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट सिचुएशन हो, और जो हम प्रूव करना चाहते हैं वो हम अल्टरनेटिव बनाते हैं. ठीक है. या हाँ, में वो सारे ही यूज करूंगा हाइपोथेसिस में, या कोई पर्टिकुलर वेरिएबल्स में यूज करूंगा? that all, देखो, first of all, that all comes from literature. What variable I will take, whatever variable I'll consider, that comes from literature. But again, when you test them, it's not always that if some variables were useful and important for one research, it will be also useful for you. Because might be that person have done research in 1990 when the liberalization was started, and then the impact was different. And now you are doing the research here when AI is come and all the different scenario. And in this scenario, those variables are not effective. Or maybe in your sample, that's not effective. ठीक है. तो हो सकता है, तो उस केस में आप उन वेरिएबल को ड्रॉप कर दोगे, कोई और वेरिएबल लाने की कोशिश करोगे जो कोई और थ्योरी सजेस्ट कर रही है, और उन वेरिएबल को यहाँ पे टेस्ट करोगे. ओके. या, थैंक यू. So about the research design, what is study about, what is study being made, where will be the study be carried out, how will be the data be analyzed, what can be required data be found, where can be data be found, fine. What will be the sample design, kitna ho, 100 ho, 50 ho, 200 ho, fine. That's should be in the we will also see that how economical to get a larger. जितना बड़ा सैंपल होगा उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का, लेकिन बड़े सैंपल की लिमिटेशंस भी हैं, उनकी कॉस्ट के ऊपर प्रॉब्लम है, और नॉन सैम्पलिंग एरर बढ़ जाता है. जैसे ही आप सैम्पलिंग से मतलब आप सैंपल इंक्रीज करते हो, that will increase the non-sampling error. What is non-sampling error? Human behavior. ठीक है. अब आप 100 का सैंपल ले रहे हो तो आप शायद अकेले कर पाओगे, बट आपको 500 का लेना है, 1000 का लेना है, तो आपको 10 लोगों को लेना पड़ रहा है. अब हर एक का जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट है. You are very efficient and you are collecting very efficiently data. The other one is not that efficient. Or maybe even you are only the person who is collecting data, but you are collecting that data 6 months, for 6 months. You are efficient for first 3 months, but you are not at all efficient for the next 3 months. Fine. So then your efficiency will hamper your data collection. Fine. Your data is not that accurate
And if that is not that accurate, then you will end up with the non-sampling error. Fine. So scientifically, the minimum size is there. You can calculate the minimum size of the sample. And after that, you have to be careful that you will use the random sampling. अब वो चाहे आप लॉटरी मेथड से कर रहे हो या आप रैंडम नंबर जनरेटर से कर रहे हो, there are lots of scientific methods to do this sampling method. And if you are following the random sampling method, you will have very less probability error or sampling error. Okay. So important concept relating to the research design, dependent variable versus independent variable. So like here, I am interested in poverty. So poverty is my dependent variable. Education and states and all those are independent variable. Fine. Which is impacting on the dependent variable. So this is the dependent versus independent. फिर exogenous variable which is not there but having an impact from outside. Fine. The culture, the state poverty, the state infrastructure, all those things which is not directly available in the model but having an impact through the other factors. Fine. So control variable, if you are controlling, for example, Ayushman versus non-Ayushman. ठीक है, तो Ayushman is your control. If you have an Ayushman card, that's the control. ठीक है, so non-Ayushman card holder is the control. तो if you want to see the impact evaluation, तो कुछ ऐसे होंगे जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनके पास आयुष्मान कार्ड होगा. So that's the controlling. You are controlling कि not having or having something. ठीक है, आप देखना चाहते हो अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो उसका बीपी कंट्रोल में रहता है, तो आपको दोनों तरीके के लोग लेने होंगे, with exercise and without exercise. So you are controlling for not exercise also. ठीक है, so that's a control. Experimental and control group, जो एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहा हूं जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे. ठीक है, लाइक दैट. सो ट्रीटमेंट, आई एम प्रोवाइडिंग एक्सरसाइज, दैट्स अ ट्रीटमेंट. ठीक है, मेडिसिन देना जैसे ट्रीटमेंट होता है ना, वैसे ही कुछ जो मैं नया दे रहा हूं, आयुष्मान कार्ड दे रहा हूं वो ट्रीटमेंट है, एक्सरसाइज दे रहा हूं दैट्स अ ट्रीटमेंट, स्लीप दे रहा हूं दैट्स अ ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडिंग कंट्रोल से दूसरे को जो भी एडिशनल दे रहा हूं, दैट्स अ ट्रीटमेंट. ठीक है. Sampling, you have two type of sampling. One is the first of all, population versus sample. So here population is all set of the observation which you want to where from you are getting a sample. And now it's very important because अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको. मैं कुरुक्षेत्र में एक पीएचडी इवैल्यूएट करने गया. सो दैट गर्ल कलेक्टेड डेटा फ्रॉम कुरुक्षेत्र इटसेल्फ. ठीक है, एंड उसने इसको बोला कि मैंने कन्वीनियंस सैंपलिंग यूज की. ठीक है, व्हाट इज कन्वीनियंस सैंपलिंग? कि मैं अपने कन्वीनियंस से अपने आसपास की कोई भी एरिया को ले लेता हूं, कोई भी सैंपल को ले लेता हूं, बट दैट्स नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैंपल, दैट्स अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल. अब उसकी लिमिटेशन क्या है? अब उसकी कोई पॉपुलेशन नहीं है. ठीक है, अब आप सिर्फ कुरुक्षेत्र के को ही पॉपुलेशन बोल सकते हो. बट व्हेन शी वाज इंटरप्रेटिंग दैट रिजल्ट, शी वाज इंटरप्रेटिंग इन टर्म्स ऑफ ऑल इंडिया. ठीक है, बिकॉज she want to do it research in all India. Then I said her that please change it from convenience to purposive sampling. Fine. If you say that it's a purposive sampling, that I want to see that the people coming inside the Kurukshetra and working here as a laborer, how much they are getting a benefit or not benefit and all those things. So purposively you have selected the Kurukshetra, and then every interpretation will be in terms of Kurukshetra itself, not in terms of India. ठीक है, क्योंकि अगर आपने उसको कुरुक्षेत्र के टर्म्स में नहीं रखा तो आप झारखंड में कोई स्टेट के बारे में बोल रहे हो तो भी आप कहोगे कुरुक्षेत्र में, बिकॉज भाई बिहार में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहां से लोग पंजाब या इसमें आ रहे हैं, तो आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर पाओगे उस रिजल्ट को यहाँ पर. फाइन. सो इन दैट केस you should be very careful what sampling you are taking and what is your population. Fine. And your every interpretation is in terms of population.
ठीक है, तो जो आप बोल रहे हो आप इंडिया के टर्म्स, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल आपने पूरी स्टडी की इंडिया में, आप ये तो नहीं कह सकते कि यूएस में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपने कुरुक्षेत्र में कुछ किया, ये जरूरी नहीं है वही काम बॉम्बे में होगा, वही काम हैदराबाद में होगा, वही बेंगलोर में होगा और वही गुड़गांव में होगा। फाइन, सो इट्स डिफरेंट. So either take a all representation of all these things, or you can say it's a purposively you are selecting this. Okay, like that. So yeah. देखो अब वही बात है, अब रैंडम, इसको रैंडम बनाने के लिए यू शुड बी, मतलब नाउ यू विल से द पीपल ऑन लिंक्डइन. ठीक है, अमंग द पीपल ऑन लिंक्डइन आई हैव टेकन अ 10% सैंपल. ठीक है, मैं अगर इस क्लास से डेटा कलेक्ट करता हूं मान लो, ठीक है, और अब इस क्लास में जो है सिर्फ रामानुजन के स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है, अभी के लिए सारे जगह के हैं, तो मैं फिर भी कह सकता हूं कि ये रिप्रेजेंटेशन जो है एकेडमिक टीचर्स का है, फ्रॉम ऑल इंडिया और फ्रॉम डीयू और फ्रॉम एनीवेयर. बट अगर मेरी ये क्लास सिर्फ रामानुजन स्टूडेंट्स की होती, ठीक है, और वो भी इको की, तो क्या मैं ये कह सकता था कि ये पूरा रिप्रेजेंटेशन रामानुजन का है? नहीं, बिकॉज इको के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ इसमें. अब मैं ये कहूं कि बिकॉज इसमें 50% स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें इको को मैंडेटरी कोर्स कर देना चाहिए, मेरे पास हिंदी वाले आके लड़ रहे हैं कि आपने हमसे तो पूछा ही नहीं, पॉलिटिकल साइंस वाले आके कह रहे हैं आपने हमसे तो पूछा ही नहीं, आपने हम पे जबरदस्ती इकोनॉमिक्स थोप दी. गॉट इट? So their representation we should take, or we should say that from economics class, from Ramanujan economic class, I have taken a 10% sample and they are saying this. ठीक है, तो या तो मैं अपने उस सैंपल की पॉपुलेशन को वही बना दूं. सो जब मैंने कन्वीनियंट सैंपलिंग से पर्पसिव कर दिया तो कुरुक्षेत्र ही मेरी पॉपुलेशन हो गई. हाँ, पॉपुलेशन जो है मेरी कुरुक्षेत्र की सिटी हो गई, कि कुरुक्षेत्र सिटी में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें से मैंने 10% सिलेक्ट किए, और उसमें से जो 10% सिलेक्ट हुए उनमें से कुछ लोग बिहार से थे, कुछ लोग झारखंड से थे, कुछ लोग हरियाणा के ही लोकल थे, कुछ लोग पंजाब से आए थे, एंड लाइक दैट. एंड इफ पर्सन इज कमिंग फ्रॉम पंजाब दे आर गेटिंग दिस मच ऑफ वेज, इफ पर्सन इज कमिंग, मतलब आई वांट टू सी द डिस्क्रिमिनेशन फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो पीपल कमिंग टू कुरुक्षेत्र, हाउ यूनिफॉर्म वेज दे आर गेटिंग. ठीक है, अब मैं इस बेसिस पे अगर मैं इवेल्युएट करूं कि नहीं बॉम्बे में भी यही होता है, तो नहीं कर सकता हूं. ठीक है, सो लाइक दैट. ओके, so like here I have given you two examples looking very similar, but they are not similar, their population is different. Read them. Are there economic returns from studying science in high school among high school educated males in urban India? Second, are there economic returns to males from studying science in high school in urban India? आप इनकी पॉपुलेशन देखोगे तो यहां सारे मेल, बिकॉज मैं कह रहा हूं कि मेल्स रिटर्न्स टू मेल्स, मैं मेल्स की रिटर्न्स की बात कर रहा हूं, चाहे वो साइंस पढ़े या ना पढ़े, तो वो साइंस भी पढ़ सकते हैं, वो नॉन दूसरा कुछ और भी पढ़ सकते हैं, और वो नहीं भी पढ़ सकते. ठीक है, जो नहीं पढ़ रहे या जो साइंस नहीं पढ़ रहे और जो साइंस पढ़ रहे, उन तीनों में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पर. ठीक है, फिर हाई स्कूल एजुकेटेड मेल इन अर्बन इंडिया. ठीक है, अर्बन इंडिया में जो हाई स्कूल एजुकेशन पढ़ रहे हैं उसमें साइंस या नॉन साइंस पढ़ने का क्या इम्पैक्ट है. ठीक है, तो दोनों का पॉपुलेशन डिफरेंट हो गया, जस्ट बिकॉज आई हैव गिवन अ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट हियर. ठीक है, माय हाइपोथेसिस इज डिफरेंट, माय स्टेटमेंट इज डिफरेंट, सो
my population is different. Are there economic returns from studying science in high school among high school educated males in urban? ठीक है, तो अर्बन इंडिया के मेल्स की बात हो रही है, तो हाई स्कूल एजुकेटेड, हाई अमंग हाई स्कूल एजुकेटेड मेल्स इन अर्बन इंडिया, आपको इसके अंदर ढूंढ रहे हो, ठीक है, दिस इज योर पॉपुलेशन। इसमें क्या देख रहे हो, रिटर्न्स फ्रॉम स्टडीइंग साइंस, तो हाई स्कूल में साइंस के भी पढ़ रहे हैं, नॉन साइंस के भी पढ़ रहे हैं। यहाँ आपने क्लियरली कह दिया कि मुझे हाई स्कूल का चाहिए, बट यहाँ पे आपने नहीं कहा, यहाँ आपने कहा रिटर्न टू मेल, ठीक है, तो आप मेल्स में हाई स्कूल वाले भी हो सकते हैं और बिना हाई स्कूल वाले भी हो सकते हैं, कोई 5th तक पढ़ा हुआ है, कोई 10th तक पढ़ा हुआ है, कोई कुछ, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड, ऑल मेल्स। तो जस्ट विद अ स्टेटमेंट इट्स चेंज्ड, योर पॉपुलेशन इज डिफरेंट, ठीक है। तो पॉपुलेशन इज समथिंग यू हैव टू वेरी क्लियरली डिफाइन, बिकॉज योर एवरी इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, आप पॉपुलेशन के टर्म्स में इंटरप्रेट कर रहे हो। सो बॉटम लाइन, डिफाइन आप प्रिसाइज इकोनॉमिकली मीनिंगफुल रिसर्च क्वेश्चन, डिफाइन पॉपुलेशन, ड्रॉ अ सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन, ठीक है, तो ये बॉटम लाइन है। अब सैंपलिंग कितने तरह की होती है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है, ये सारे आपने टर्म्स मेरे ख्याल से पढ़े हुए हैं पहले। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, कन्वीनियंस, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। फिर कोटा सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, मैंने अपना एक सोर्स चूज किया, उसने एक और सोर्स चूज किया, उसने एक और सोर्स चूज किया, लाइक दैट, तो इट्स अ स्नोबॉल सैंपलिंग, दैट्स अगेन इज मोस्ट पॉपुलर सैंपलिंग इन मैनेजमेंट, बट इट्स नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं है। सो दिस इज द and now the methods of data collection. So you can collect data from primary method, primary data when you collect data from directly from respondents, ठीक है, respondents जो भी आपकी टारगेट पॉपुलेशन में, आप उनसे जब डेटा कलेक्ट करते हो, so that will be primary data। अगर आप बुक से, जर्नल से, वेबसाइट से, ठीक है, उधर से डेटा लेते हो, that's a secondary data, ठीक है। So primary data, secondary data, various publications and various foreign publications, technical, trade journals, book, magazine, newspaper, reports, and publish various associate connections and all those things, ठीक है। अब डेटा कितने टाइप का होता है, वन इज द क्रॉस सेक्शनल डेटा, एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम बहुत सारे वेरिएबल को स्टडी करते हैं तो वो क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है। अगर हम एक ही वेरिएबल को ओवर टाइम स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल जीडीपी को हम देख रहे हैं, हमारी नेशनल इनकम को ओवर टाइम कैसे वेरी कर रही है, ठीक है, तो दैट्स अ टाइम सीरीज डेटा। जब क्रॉस सेक्शनल भी हो और टाइम सीरीज भी हो, दोनों मिला के, तो उनको पूल्ड डेटा कहते हैं, दोनों का पूल्ड, क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज, ठीक है। अब वो पूल्ड अगर सेम ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, अगर वही कंट्री जो पहले थी 1990 में, फिर वही कंट्री 2000 में और वही 2010 में है, ठीक है, सेम कंट्रीज, इंडिया, अफ्रीका and South Asia, like all those things. So you can say that's a panel data. So all pooled data is not a panel data. ठीक है, sorry, all pooled data is not a panel data, and all panel data is pooled data. ठीक है। सो अब आपको अगर सर्वे करना है तो सर्वे के लिए गूगल फॉर्म तो हम लोग जनरली यूज करते ही हैं, ठीक है, उसके अलावा देयर आर अदर टाइप ऑफ दिस थिंग, सर्वे मॉन्की एंड ऑल दोस packages which you can use to collect a data from the various sources, fine। Now the web data अगर आपको collect करना है, आजकल तो हम फेसबुक से, ट्विटर से, ट्विटर एनालिसिस, फेसबुक एनालिसिस, हम लोग कितना ट्रेंड्स, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, वो सब डेटा भी हम कलेक्ट करते हैं, मैनेजमेंट में हम लोग काफी काम करते हैं, तो ये सारे उसके वो हैं। देन फाइनली व्हेन यू हैव अ डेटा, यू वांट टू एनालाइज देम। सो हाउ यू कैन एनालाइज देम, तो विद द हेल्प ऑफ दीज सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। अब आपके पास बहुत ही बेसिक एक्सेल तो सबको पता है, ठीक है, एक्सेल हम लोगों को पता है, बट देयर आर लिमिटेशन ऑफ एक्सेल, जब तक कि वो पेड वर्जन ना हो
तो उसकी ऑब्जर्वेशन लिमिटेड होती है। हम लोग जब इकोनॉमिक्स में काम करते हैं तो जब हम सेंसस डेटा या एनएसएस डेटा लेते हैं उसमें लैक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, करोड़ ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं, तो विच इज नॉट सपोर्टेड बाय द एक्सेल। सेकेंडली, एक्सेल में आपको फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, ठीक है। आपको रिग्रेशन करना है तो आपको बीटा कोफिशिएंट, बीटा हैट और ऑल दोस थिंग्स यू हैव टू राइट दैट इन अ फार्मूला। हाँ, ड्रॉप डाउन मेन्यू में आजकल पेड वर्जन में वो भी आता है, ठीक है, बट अगेन दैट यू कांट do with the help of syntax. But very friendly is nowadays the SPSS and Stata. But one major limitation of these two software is that's a paid version. ठीक है, और when in a COVID period, mostly the when work from home started, तो बहुत सारे कंपनीज ने इतना तो बजट था नहीं कि वो हर एक को घर के लिए सॉफ्टवेयर दे पाए, सो दे स्विच टू सम फ्री सॉफ्टवेयर्स एंड उसमें है पाइथन एंड आर, ठीक है। आर इज वेरी मच फ्रेंडली फॉर द सोशल साइंस यूजर्स, ठीक है। पाइथन इज मोर फॉर मैथमेटिकल उसमें, एंड इसमें आर की एक और एडवांटेज है दैट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल ग्राफिक्स, ठीक है। ग्राफिक बहुत अच्छे हैं इसके, एंड डायमेंशन ग्राफ्स आप बना सकते हो इससे। Even you can do the Facebook and Twitter analysis with the help of this. Meta analysis you can do with the help of R. Lots of things you can do with the help of R, which you can't do with the help of Stata and the other SPSS. So R is very popular in these days. So finally, you have data, you have collected that, you have interpreted that. Now you will report it. Okay, you will write your report, you will conclude your argument, you will write in a proper step how your reports will be written, and you will report it in the article, in journal, in anywhere. Fine. So that's it. So one more thing here, if you want to collect literature review, you can follow the Google Scholar. Fine, or the Google search base engine or ResearchGate. Lots of the different type of this thing is available where from you can download the articles. Fine. So all these Scopus site and all those sites are available. So if you want to download from Google Scholar and you want to if you click here on the last 3 lines, you can get your article by selecting the years, author's name. Fine, whether you want some specific title into some word into the title. For example, I'm looking for agriculture articles or livestock articles or COVID related articles. So I want COVID in anywhere in the article or in the title. So that is there. You can see with all the words, with the exact phrase, with at least one of the word, without the word, where the word occurs anywhere in the article or in the title. Okay, so you can search in that way. Similarly, you can do it with the help of ये आप year बता सकते हो कब publish हुआ है. If you want a recent article, you can write a recent year. If you want some middle period article or the old article, you can write it. Similarly for Scopus. ठीक है, but Scopus के लिए research scholar के लिए तो you don't need any access. It's a freely available, but Scopus is not freely available. If you have access, then only you can do it. So that's it. Thank you. देखो, सिग्निफिकेंस का हम अल्फा से, ये जो आप बोल रहे हो वो पी वैल्यू है, पी वैल्यू को हम अल्फा से करते हैं. अल्फा जो होता है जनरली विल टेक अल्फा एज ए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है. बट ऐसा कोई बेंचमार्क है नहीं. आप 1% जितना छोटा होगा उतना सिग्निफिकेंटली वो इम्पैक्ट डाल रहा है, इतना ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है,
ठीक है। सो अगर वो वैल्यू जो है 0.001 है तो आप कहोगे ये 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आ रहा है, ठीक है, या उससे भी छोटा है तो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट है। अगर वो बिटवीन 1 एंड 5 है तो आप कहोगे कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे है, क्योंकि वो 1 से ज्यादा है और 5 से कम है, ठीक है, तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे है। जब वो 5 से ज्यादा होगा और 10 से कम होगा तो आप कहोगे 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टाइप 1 एरर आपका बढ़ता जा रहा है। एंड व्हाट इज अ टाइप 1 एरर? कि द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव एक्सेप्टेड द नल व्हेन इट्स एक्चुअली ट्रू, सॉरी, रिजेक्टेड अ नल व्हेन इट्स एक्चुअली ट्रू, ठीक है। तो मतलब ये कि मैं ये कहना चाह रहा था कि पावर्टी का, एजुकेशन का इम्पैक्ट पावर्टी पे यूनिफॉर्म है, ये मेरा नल था, ठीक है। बट अगर मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और रिजेक्ट करके कहा कि नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है, बट ऐसा हो सकता था, क्योंकि देखो मैंने क्या किया, मैंने सैंपल कलेक्ट किया, वो सैंपल एक्यूरेट तो नहीं है, वो तो मेरा सैंपल बायस भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है मैंने सिर्फ प्रोफेसर्स की पॉपुलेशन ले ली, ठीक है। अब उस बेसिस पे वो बिल्कुल लाइन पे वेरी कर रहा है 1% और 5% के बीच में, तो मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया, मैंने मान तो लिया कि हाँ ठीक है वो ऐसा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है या नहीं है वो डेटा के टर्म्स में, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कह रहे हैं, हम एक्यूरेटली नहीं कह सकते, ठीक है। तो 5% अभी भी चांस है कि ऐसा ना हो। तो जितना ये परसेंटेज लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है, उतना हम उतना स्ट्रांगली नहीं कह सकते कि इज इट सो। अगर हम 10% पे कह रहे हैं तो इसका मतलब है कम, मतलब 90% चांस पे ही हम कह पा रहे हैं कि दिस इज ट्रू। 10% अभी भी ऐसा केस है कि रिवर्स हो सकता था, ठीक है। इसको अगर हम लोग, मतलब बेसिकली जब हम डायग्राम बनाते हैं तो इस शेप में, जैसे एक बेल शेप में बनता है, ठीक है, हाँ। तो जो इस एरिया में लाई कर रहा है, क्योंकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी होता है ना, ये मान लो हमारा नल है, यहाँ पे एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है जो लास्ट वाले एरिया में, तो अगर ये ट्रू नहीं है तो इसका मतलब वो ट्रू है, ठीक है। तो हम जितना लेफ्ट या जितना राइट जा रहे हैं तो दोनों तरफ हमारे पास अल्टरनेटिव है, तो जितना हम साइड की लाइंस पे हैं, तो इसका मतलब है वो चांसेस ज्यादा है कि अल्टरनेटिव भी ट्रू हो सकता था, बट बाय चांस हमने नल को रिजेक्ट कर दिया। सर ये तो टाइप ऑफ एरर में आ गया ना, है टाइप एरर आ हाँ, गया। वही अल्फा और पी इज, दिस इज ओनली टाइप 1 और टाइप 2 एरर। ये इसी की बात है कि आप कहाँ अल्फा को सेट कर रहे हो। तो इफ यू इंक्रीज दिस 1% 5%, तो बेसिकली आप टाइप 1 और टाइप 2 एरर को एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है। वो आपकी थ्योरी के ऊपर, आपकी रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर मेडिसिन देना चाहता हूं, ठीक है, बिफोर ऑपरेशन स्लीपिंग पिल्स देना चाहता हूं, अब मैं इसको टेस्ट कर रहा हूं कि अगर मैं स्लीपिंग पिल्स दूंगा तो उसको पक्का नींद आ जाएगी, ठीक है। अब 5% चांस है उसको नींद नहीं आएगी, तो सोचो उसके लिए कितना पेनफुल होगा उसमें ऑपरेशन होना। तो मुझे इसको रिड्यूस करना चाहिए, 1% पे करना चाहिए, ठीक है। आई कैन नॉट अफोर्ड कि उसको नींद ना आए, तो मैं इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का अल्फा जो है उसको जितना छोटा हो सकता है उतना करने की कोशिश करूंगा। बट यही अगर दूसरा केस हो कि ठीक है, मतलब आपको जुकाम है और जुकाम की ये मेडिसिन दूंगा तो आपका जुकाम ठीक हो जाएगा, इतना क्रिटिकल नहीं है, मैं इसको 10% पे भी रख सकता हूं। लेकिन क्योंकि अगर मैं 10% पे रख रहा हूं तो मुझे सस्ती दवाई मिल रही है, ठीक है। अगर मैं उसके ऊपर ज्यादा टेस्ट नहीं कर रहा हूं तो वो टेस्टिंग कॉस्ट बच रही है मेरी, और वो कॉस्ट बचने से मेरी मेडिसिन सस्ती हो रही है, ठीक है। तो मैं 10% भी अफोर्ड कर सकता हूँ, कोई नहीं, मेरे को खांसी जुकाम सही नहीं होगा तो एक और मेडिसिन खा लूंगा, फिर एक और खा लूंगा, उतना रिस्की चीज नहीं है। बट दिस इज रिस्की कि अगर मेरे को नींद नहीं आई और ऑपरेशन मेरे होशोहवास में हुआ तो इट्स वेरी पेनफुल, ठीक है। तो कितना क्रिटिकल है इशू, उसके बेसिस पे हम अल्फा डिसाइड करते हैं। मीन्स कि सर ये वेरिएबल पे डिपेंड करता है। आपकी आउटकम पे, मैं ये वेरिएबल थोड़ी, मेरा आउटकम है कि मैं क्या चाहता हूं होना, कि पावर्टी सही होगी या नहीं होगी एजुकेशन की हेल्प से, ये कितना क्रिटिकल इशू है मेरे लिए। अगर मैं ऐसी सिचुएशन में हूं, काला आंडी में हूं,
उड़ीसा का एक एरिया जहां बहुत पॉवर्टी है. सो वहां मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है टू एलिवेट पॉवर्टी, एंड आई कैन नॉट take risk, any risk. But if it is the same case in some area जहां पर बहुत मतलब नॉर्मली बहुत कम लोग हैं जो पुअर हैं, तो वहां ठीक है, आई कैन अफोर्ड. अगर ये नहीं हो रहा तो मैं डायरेक्टली जाके उनको कुछ कैश ट्रांसफर कर दूंगा या कुछ और कर दूंगा, तो आई कैन रिड्यूस इट डायरेक्टली. ठीक है, अगर एजुकेशन के थ्रू नहीं हो रही तो कोई नहीं, डायरेक्ट ट्रांसफर से कर दूंगा. ठीक है, बट अगर बहुत सारे लोगों में है तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, तो मुझे एजुकेशन या कोई और अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि दैट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव. ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है और कितना पॉसिबल है, कितना रिलाय करता है इस टेस्ट के ऊपर, उसके बेसिस. थैंक यू सर. Existing concept. Say, maybe literature, it's not there. So say for example, I want to find out a relationship between investment behavior and personality. Say, and I have searched many literature, and I didn't say, and I found that say people who are doing meditation, they are having a good practice, and I mean their returns, investment returns are good. This meditation variable is not there in anywhere in the literature. So can I mean I can justify that. First of all, it's very hard to believe that any variable is not having there in any literature. Maybe it's not there directly on financial behavior. Fine, but indirectly, that if my behavior is मैं बहुत आलसी हूं तो मैं काम ही नहीं करूंगा, काम ही नहीं करूंगा तो मेरी इनकम ही नहीं होगी, इनकम ही नहीं तो क्या फाइनेंशियल डिसीजन, क्या अदर थिंग्स. नाउ आई वांट टू सी दिस रिलेशनशिप ऑन माय फाइनेंशियल, इसके ऊपर या कुछ ना कुछ रिलेटेड. ठीक है, देन अगेन many because theory sets up after getting this empirical results only. So yes, you can go ahead, you can go ahead, because आप empirically finally prove तो कर ही रहे हो ना कि it's a relationship. But then when you want to interpret it, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिना लिटरेचर के उसको इंटरप्रेट करना, क्योंकि वो बिहेवियर, मतलब आपने ये तो कह दिया कि मैंने जैसे ही बिहेवियर को चेंज किया मेरा फाइनेंशियल डिसीजन चेंज हो रहा है, बट वो क्यों हो रहा है, क्या इंपैक्ट दिखा रहा है. या तो आपके क्वेश्चंस बिहेवियरल में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि आई वॉक अप अर्ली, आई स्लीप लेट, मतलब क्या बिहेवियर की आप बात कर रहे हो, हाउ मच आई एम डूइंग एन, मतलब इन आई एम रीडिंग, मतलब माय रीडिंग हैबिट, माय ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, कितना मैं अवेयर हूं इन चीजों से, तो क्या मेरे क्राइटेरियाज हैं उन पे डिपेंड करेगा. ठीक है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जो ऑलवेज देयर इन दिस, बट यू कैन डेफिनेटली इंट्रोड्यूस न्यू कंसेप्ट्स. दैट इज व्हाई वी वांट टू डू रिसर्च. ठीक है, तभी तो नई चीजें लाएंगे, तभी तो कुछ नया पता चलेगा, पुराना ही कर देंगे तो कैसे पता चलेगा. ठीक है, या such topic, but don't you think that quantitative kind of study is better than the qualitative ones, because it's more easier to show and then interpret because we will have the data. देखो, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब which one is better is very difficult to answer, because when you want to do qualitative things, मैं एक महिला के जीवन पे कुछ एक चेक करना चाहता हूँ. ठीक है, अब मैंने सबका डेटा लिया और कहा कि ओके, एवरीवन इज, वेयर द वुमन इज एजुकेटेड दे आर अर्निंग मोर, व्हेन वुमन इज नॉट एजुकेटेड दे आर अर्निंग लेस. डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है, ओके, इफ दे आर एट सेम लेवल वहां डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है. बट मैं जब पूरा एक आपका पूरा जीवन लेता हूँ शुरू से, मैं बड़ी हुई, मेरे ब्रदर को लैपटॉप मिला, मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं कंप्यूटर इलिटरेट रह गई. ठीक है, मैं आगे बढ़ी, मुझे दोनों को प्राइवेट स्कूल्स में नहीं भेज सकते थे, एक को सरकारी स्कूल में भेजा, एक को प्राइवेट में भेजा.
ठीक है, तो मेरी इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम या लैंग्वेज, सम बैरियर आई एम फेसिंग, ठीक है, लाइक दैट देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आई व्हेन आई टेक अ स्नैपशॉट ऑफ योर दिस आर माइक्रो बेस्ड स्टडीज, ठीक है, हम लोग माइक्रो हम लोग हमारे इकोनॉमिक टर्म्स में हम बात करते हैं, जब हम ब्रॉडरली पूरे इंडिया की बात करना चाहते हैं तो हम इंडिया की करते हैं, लेकिन बिना विलेज स्टडीज को लिए हुए, जब एग्जैक्ट विलेज या कॉलोनी या स्पेसिफिक कुछ 10 लोगों की 10 जब तक हम वो नहीं लेते केस स्टडीज, तब तक हमें भी नहीं पता चलता कि एक्चुअली, क्योंकि बड़े मैक्रो लेवल पे तो हम कहेंगे अरे जीडीपी हमारा पहले तो इतना था अब इतना हो गया, तो वी आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, बट एट द सेम टाइम हमारे बहुत सारे लोग और पुअर होते चले जा रहे हैं, पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब हम उसको एड्रेस करने के लिए जब तक हम एग्जैक्टली उनके कॉज को नहीं देखेंगे, व्हाई दिस पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग, maybe we are not addressing the education, we are not addressing exactly, or maybe addressing education in terms of making lots of private schools, but जो पहले से पुअर है वो कैसे पढ़ेगा प्राइवेट स्कूल में? So that's what I want to say and ask that, it's difficult to do that kind of studies. Now, the quantitative ones are The methods easier. are different, methods are difficult, and lots of this मतलब मैंने मैनेजमेंट में भी किया है, जैसे दे जो आपका लाइकट स्केल्स वगैरह पे होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप डायरेक्टली उसको करो वो कभी अच्छे रिजल्ट नहीं आते, तो समटाइम्स पीपल मैनिपुलेट इट, ठीक है, एंड इफ यू मैनिपुलेट इट सो वो उसका पर्पस ही खत्म हो गया, ठीक है, सो आई नो, बट उसमें क्या है, लाइकट स्केल में 7 और 9 आप स्केल बढ़ा दो तो डेफिनेटली यू विल गेट अ बेटर एक्यूरेसी, ठीक है, हम अपनी उसके लिए उसको 5 स्केल पे, 4 स्केल पे, 3 पे, बिकॉज हम जब रिग्रेशन के टर्म्स में बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जितना ज्यादा स्प्रेड होता है उतना अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, तो आप जब फ्लेक्सिबिलिटी दोगे जो आंसर कर रहा है उसको, ठीक है, बिकॉज ही इज कंफ्यूज, आई टेक ऑन 5 और 4, ठीक है, अब उसको आपने फ्लेक्सिबिलिटी 10 की दे दी, तो अब वो 5 और 4 की जगह 5 और 7 में कंफ्यूज है, मतलब बिटवीन 5-7, तो ऐसे में वो 6 तो चूज कर लेगा, तो फिर भी वो थोड़ा अपर साइड में ही गया ना, नीट लोअर में नहीं आया, तो इसलिए जितना फ्लेक्सिबिलिटी आप दोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं, तो ऐसे में आपको मेथड को करेक्ट करने की जरूरत है, ना कि अपनी मतलब रिसर्च को ही चेंज कर दो, इसके लिए मैं बल्कि कई जगह बोलता हूँ, जैसे अभी स्कोपस के ऊपर भी डिबेट चल रही है, कुछ कुछ ऐसे रिसर्च एरिया है जहां पर जो स्कोपस आर्टिकल्स हैं दैट्स नॉट उसमें जो इंडेक्स वैल्यू है दैट्स वेरी लेस, मेनली एग्रीकल्चर में हमारा बिलो 1 वो रहता है, ठीक है, तो अब जब हम ज्यादातर इवेल्युएट करने जाते हैं तो वो कहते नहीं आपका तो इम्पैक्ट फैक्टर कम है, तो आपकी अच्छी स्टडी नहीं है, तो इसका मतलब मैं अपनी स्टडी चूज करूं इम्पैक्ट फैक्टर देख के या मैं प्रॉब्लम को देख के, ठीक है, तो ये बहुत प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप इस वजह से चेंज मत करो कि वो डिफिकल्ट है, आप उसकी डिफिकल्टी को सॉल्व करने की कोशिश, ठीक है। And sir, also in today's context, like जो भी रिसर्च हो रही है उसमें हम ऑनलाइन सर्वेज के टूवर्ड्स जा रहे हैं, तो फिर वो तो एक बायसनेस ही आ रही है ना, दैट ओनली दैट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कैन आंसर हु आर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली। देखो आई नो, अगेन फिर मैं वही कह रहा हूँ कि आप जब इसको इंटरप्रेट करोगे तो फिर यही बोलोगे कि मैंने उन्हीं के बीच में सर्वे किया हु आर कन्वीनियंट ऑन डूइंग ऑन गूगल फॉर्म, ठीक है, आप या फिर उनके अल्टरनेटिव, जैसे एक अभी एक जेडीएमसी में फैकल्टी हैं वो अपना वो सर्वे कर रही हैं, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को जैसे सर्कुलेट किया फॉर्म, तो उनको कहा कि अगर मतलब किसी स्लम से डेटा कलेक्ट करना है तो आप फॉर्म भरोगे, क्वेश्चन उनसे पूछोगे, तो दैट गिव्स यू ईज कि पहले आप उसको क्वेश्चनर में भरो फिर उसको एंटर करो, इससे अच्छा आप डायरेक्टली उसको ले रहे हो, ईज दे रहा है, बट ईज को लेने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हीं पे छोड़ दो, वैसे तो बेस्ट तरीका ये है चाहे आप पढ़े लिखे से भी पूछ रहे हो आप पूछो, क्योंकि आपके क्वेश्चन को आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता, आप उसके ऊपर छोड़ोगे वो जितना समझ पाएगा समझेगा और आंसर कर देगा, और जब मुझे मतलब मुझे आप मेरी फ्रेंड हो, आपने मुझे बोल दिया अब मुझे आंसर तो करना है, बट ये तो नहीं बोला कि एक्यूरेटली करना है, ओके ए बी सी randomly I am picking any option, which is not good for finally when we do a research. It's not solving our objective for doing a research. उसके बेसिस पे कुछ आया आउटकम और कुछ भी आ गया, like that.
So can I ask one more question? Yeah, please. So You to can ask prepare a either. hypothesis, like on an average, how many books and research papers should we read? Like at PhD level and at There both is at no masters, as such there is no. number. We can't say you can read 5 So we can go papers. for the no, we can Of go for the course, maximum definitely number. maximum number. So again, there is no maximum or no minimum. आपके अगर sufficient article मिल जाते हैं तो 10 भी enough है. लेकिन वो sufficient जो articles हैं वो आपकी methodology के ऊपर exactly बता रहे हो कि कौन सी क्या methodology यूज करनी है, क्या variables लेने हैं, ठीक है, क्या पहले प्रोसेस यूज किया गया और क्या, तो कुछ ना कुछ मतलब मे बी साइटेशन इज फाइन 10 बट रेफरेंस बहुत सारे होते हैं. मैंने अपनी पीएचडी के लिए मुझे याद भी नहीं, मेरे ख्याल से 10,000 पढ़े होंगे या 15,000 का, पता नहीं कौन कौन सी लाइब्रेरी में जाके फोटोकॉपी, उस टाइम तो ऑनलाइन इतना ज्यादा होता भी नहीं था, तो फोटोकॉपी करा के बहुत कुछ लेके आते रहे, पढ़ते रहे. I think it will depend on the topic as well. Like what topic we are choosing, very old, current, or like not very recent. I think it will depend on that as well. Thank you, sir. Okay. Thank you. Earnestly try to answer very questions very sincerely. And I hope you all will get it. Okay, fine. I would like to extend my sincere thanks to Birwal sir for coming here and sharing his insightful thoughts on research methodology. I believe this is going to help us a lot, especially with the fourth year coming up for the NEP, where the students are taught to be. I think we need to replicate his entire presentation in our class for the research methodology paper. So thank you, sir. Thank you for coming here. And this was very great. Thank you. That is very good. That's a same place where the good break part of the
A very good afternoon to one and all present here. I once again welcome all of you in the post-lunch session of the 7-day FDP program on research methodology. For the post-lunch sessions, session 3 and 4, we have Mr. Naresh Kumar with us. I welcome you, sir. Mr. Naresh Kumar is working as assistant librarian at Central University of Haryana since 2016 and recognized for his work through Best Performing Non-Teaching Official Award 2019. He has got distinction in International Master in Digital Library Learning from Oslo University, Norway, Tallinn University, Estonia, and Parma University, Italy. He holds fellowships, scholarships like UGC JRF, India, Erasmus Fellowship by European Union, and Fellowship by Government of Norway. Further, he has received Best Paper Award at Barcelona, Spain, and RDA European Early Career Scientist Working with Data Award at Dublin, Ireland. Mr. Naresh has done internship at CERN Geneva, Switzerland, and at National Library of Estonia at Oslo University, Norway, and at International and National Council of Research, Pisa, Italy. Besides this, Mr. Kumar has got published 2 books and 21 research articles. He has visited 17 countries for various countries for various educational and professional assignments. He may be contacted for knowing more about digital libraries, communication skills and personality development, e-resources, research methodology, reference management, and career guidance. The title of today's talk is Bibliography Management Softwares and Databases. I welcome you, sir. Now I request Mr. Naresh Kumar to come over the stage, and I also request Dr. Umesh to come over the stage and felicitate sir with the book. It's an initiative. Presenting a book is a recent initiative started by our honorable principal, Mr. Rasal Singh. Thank you for joining with us, sir. Now I request you to take over the podium and begin with the session. So good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank our librarian, Dr. Baby, our sir, the coordinators of this program, and the scholars, faculty members who have come from all around India to attend this particular research methodology workshop. So today's my topic is about referencing. You know, am I audible from here? All right. So we know that referencing is this method is कोई बात नहीं कोई बात नहीं. So referencing is very important aspect of our research. Whatever we write, whether it is a research paper or a thesis, dissertation, or any kind of a research report, we need to mention references. We need to put in text citations, references, bibliographies, and these terms are very obvious and very useful and important for these in this area. So I'm pursuing my PhD on this topic, and whatever I know, I would like to share with you all. So today we'll be covering the online citation tools, automatic citation tools, reference managers, which are very much useful for you in your research, along with reference styles and the concept of referencing. So as you can see the picture, whenever we think about referencing, we may think about whether there will be comma or full stop, or whether it has to be in brackets or not. These things are obvious. You know, everybody thinks like that, and somewhere we make mistakes. Doesn't matter. Referencing means
we are giving credit to the person whose information we are taking and using in our own resources or research resources. So it's very important not to do theft, and just try to cite that particular source in your research. Now, whenever you do it, you need to choose a reference style. Whatever subject you are involved in, you need to choose your reference style. And choosing your reference style depends on various factors, which will I'll cover in the next slide. But why we need this referencing references? If you see an paper published in Elsevier, Springer says, so what happens? You will find so many in-text references, or reference list is very long, and you'll see means that particular person has wrote single line, but he's citing 10 people, 10 papers for that line. It means he is thoroughly read that particular literature. And as a researcher, as a faculty member, it's your duty to do that. It will ensure, if you are citing more and more papers, it will ensure that your paper is quality research, and it will definitely going to be accepted. It also gives an good understanding to the referees, reviewers, examiners that your research is a quality research. So make a mind that you should not avoid references or in-text citations or bibliography in your research. You have to use maximum of them. Now, this is what I was talking about. How do you select whether this particular reference style is my reference style? It depends on journal, publisher, your supervisors, your seniors, or online citation tools. Means if that particular reference style is available in Mendeley, Zotero, or Scribner, MyBib, BibMe, then you are going to use that. Or if your supervisor has told you that please use this reference style, or the journal in which you are publishing that particular paper, that has demanded you that you have to use APA, MLA, Harvard, Chicago, or whatever reference style. So it's very important. These are the 6 common steps and very important steps that you need to always keep in mind while doing research. First, you need to read. Then you get an idea out of that reading, and then just note down that idea. And then put in-text citation as well as put reference entry in that. Now, what mistake we do? We generally put reference, but we do not put in-text citations. I'll explain them. Narrative in-text citation, parenthetical in-text citation. So along with reference entry, you need to also provide reference in-text citation. And then we repeat this process. So means what we are doing, we are just trying to write everything first, and then we search for references. Ye kahan se liya tha? Oh, I think because it's a long process. Research is a long process. After 6 months, if you come back to the same paragraph, you may forget that that PDF is, I think, lost. So this process you need to do at the same time. If you have read one paragraph of a paper, then just do reference entry and in-text citation at that time only. Then these are the bibliographical terms which you must keep in mind while taking or citing any source.
means author's first name, last name, title, journal name, page number. You need not to worry about, memorizing them, but you need to have an idea that these are the things which I must use. So this is an example of a particular reference entry. See, you can see author is there, article title is there, journal title is there, volume, issue number is there, year of publication is there, and page range is there, URL or digital object identifier is there, and name of the database is also mentioned here. So these are the very important and crucial information which usually we provide. All right, so I was talking about in-text citation. Here you can see, here you can see it's a parenthetical citation and this is narrative citation. Parenthetical means you write a paragraph, you taken a paragraph from somewhere and you write that paragraph, and after that paragraph in brackets you wrote last name of the author, comma, year. So that's a parenthetical citation, in text citation. Then we have narrative citation. Verma said that, Tripathi mentioned that, and then after Tripathi means the last name, in brackets to mention the year. But it's a APA style, American Psychological Association style, which I'm showing here. So whatever paper you are writing, whatever research report you are writing, you have to mention, these in-text citations, and these are the two options, parenthetical or narrative. You can change them one by one. In first paragraph, you said narrative and then parenthetical. Likewise, you can do or for one author, two author, three author. Now you may get confused. For three authors, how do I write? For one author, how should I write? For two authors, how should I write? If there is no author, how should I write? So these are the styles. नहीं, आपने क्या गलती की होगी, जैसे यहाँ पर this is the example. Here last name, comma, year, but in MLA it's page number. If you use mix these two, it's not acceptable. APA MLA or APA MLA Harvard, you cannot mix them. You can use one. So use one, but these two are allowed. ये चारों अलग हैं, ये चारों में ये दोनों सब में आएंगे. In APA, this is APA style. In parenthetical in-text citation, we write like this. In narrative citation, we written like this. Yes, that's it. Narrative means you start writing by naming that person, but in parenthetical, after the finishing the paragraph, you just put in brackets the last name, comma, year. You can use both, but here you have to use. I mean, you have to choose APA, MLA, Harvard, Chicago, IEEE, CSC. Modern Language Association. Here, last name, page number. No comma, nothing, no year. हाँ, तो उसमें आपका ह्यूमन इंटेलेक्ट काम करेगा, because we are not machine. If that software has mentioned 5 times parenthetical, then 2 times you can do narrative. It will enhance your writing because there are reviewers who are checking what you have done, right?
So now you may be worried, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? Every site or every reference style has its own manual. वो manual भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. There are citation generators, automatic citation generators available freely. You can use them. You can prepare your in-text citation as well as reference entry. Here ये क्या हो गया? Here I am showing this is in-text citation and this is reference list. Both are important. आपने ये मेंशन कर दिया, ये नहीं किया, means your reference is not complete. आपने ये कर दिया, ये नहीं किया, your reference is not complete. Most of the time what happens, we write this and we check for plagiarism in Turnitin or Drillbit, and what it says, plagiarism have complete 100%. But you are saying that I have mentioned all the references, I have not done any theft. So what is the problem? Problem is this. In-text citation is very important. Uske aage bhi there is a problem. What is that problem? If you have mentioned this one and you have not put that content in double quotes, I'll discuss that later. If you have not mentioned that particular information which you have taken from somewhere else, in not in double quotes, then it will be a plagiarism. If it is directly taken, the whole paragraph you have taken, whole line you have taken, yes, then it has to be in double quote. Yes. But what you should do, most of you will say, I'm getting plagiarism in Turnitin, and I have done both of these things. So what I think I should do is I will put everything in double quotes. Means whatever I have made in text and provided reference entry, it's not allowed. Only 15% of your content. If there are 100 pages, 15 pages you can put under double quotes. Yes, it's a rule, 15%. Whatever it is, it can be any document. 15% of the content may be under double quotes, not more than this. Then a message will come out from Turnitin, because we use Turnitin. It says it exceeds the limits of 15% quotation marks. So please reduce. Should be there. As a researcher, you should use it. 15% to avoid plagiarism. Because you are saying whatever you have taken. If you have taken something from somewhere, you are just mentioning it. In-text citation, reference entry, and double quotes. This is not mine, but I have taken from there. So I have taken this screenshot. This is title of the particular journal, and this is the author, title, date. So, that's how you can pick out the various bibliographical details. These are called bibliographical details of a particular source, whether it is a journal or a book or a dissertation, anything. Now there is another question which confuses. What is difference between bibliography and references? Anybody knows it? Anyone else?
की साइटेशन लेते हैं रेफरेंसेस में, और बिब्लियोग्राफी में रिसर्च पेपर्स की तो देते हैं, उसके साथ और भी अगर हमने कोई आर्टिकल पढ़ा है तो न्यूज पेपर बुक को और it shows the confusion. You should not be confused. For example, it's a Sunday and you have read the newspaper article. You thought the title is matching to my research, but nothing comes out of it. One day you read one chapter of the book again by going to the title, but there was nothing, not even a single idea you took up from that particular source for your research. So what happened? You read two sources. You spend your whole Sundays for that. What will you do? You cannot put them in text citation, right? Because you are not taking anything from that source. But you can mention that in bibliography. How? By mentioning that reference entry. So bibliography is a list of those references which you have read and which you may not have included in your research. But reference list is the list which you have used in your research, first thing, and you have put in text citation for that. ठीक है, reference क्या है? In text citation or reference will go together, but bibliography may include those references which have in text citation as well as those reference entry which are not used in your research but you have read them. Clear? So now you should not say anything else. This is clear. हाँ. No. If you are providing a bibliography, and in case of bibliography, we use only for dissertation and thesis. One thing is clear. Or a book, book, dissertation and thesis. So at that time we exclude bibliography. So pass ho gaye, right? But for research paper, we do not use bibliography. For research paper, we do not use bibliography. There we use only reference list and in-text citation. If there is a reference list and in-text citation is not there for any of the reference entry, it will not go hand in hand. Means both reference entry and in-text citation should be there in research paper. अगर आपने 10 रेफरेंस एंट्री दी है लास्ट में तो 10 इंटेक्स साइटेशन होने चाहिए. नो है तो एक रेफरेंस को हटाओ या फिर इंटेक्स साइटेशन लाओ. क्लियर? ओके. हाँ, पैरेंथेटिकल साइटेशन और नरेटिव साइटेशन. हाँ, वो तो लिखते ही हैं हम. रिसर्च पेपर में हम रेफरेंसेस लिखते हैं, पूरी लिस्ट आती है. वो लिस्ट 10 की है, 10 रेफरेंसेस हैं. वही 10 आपके इंडेक्स साइटेशन के अंदर भी होने चाहिए, मैच करने चाहिए. वो मैच करने चाहिए. हाँ, ये 10 है तो ये भी 10 होंगे. यहाँ कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा रिसर्च पेपर में. एक्स्ट्रा होते ही editor will send you back your paper and say either delete it or add in-text citation for this. Now comes quotations. This is very important.
There may be a single quote, there may be double quote, there may be triple quote. And if you have a good knowledge of quoting something at right places, in the right manner, in right format, your formatting skills, means your chances of getting accepted your paper has maybe increased. Right. So these are the questions everybody is going to have in their mind. Let's discuss them. For 3 to 4 words, you need not to cite. If there are 3 to 4 words which you have taken from somewhere else in your research, do not cite it. ठीक है? Clear है? If Mahatma Gandhi has said, "Hey Ram," I may also say, "Hey Ram." So Turnitin cannot say, "वो वाला Hey Ram is only Hey Ram." Your Hey Ram is not correct. So up to 4 words without citing a source चल जाएगा. ठीक है? Don't worry. If you are writing 4 words from somewhere, Turnitin कुछ नहीं कहेगा. और कहेगा तो भी 10% is allowed. No, up to 4 words, you need not to have it. Clear. Then if it is more than 4 words, means 5 words to 39 words. 5 words to 39 words, you have to quote. If you are taking 20 words, 30 words, or up to 39 words, you have to put that content in double quotes. ठीक है? If it is more than 40 words, फिर क्या करेंगे? Then you have to put that content in the center. 2 double tab इस side से, 2 double tab right and left की side से. I'll show you how. हाँ. For single inverted comma, I haven't discussed, but for, it's double quotation, which I have discussed till now. Yes. हाँ, नाम भी लिखना. So this is the way in which you put 2 tabs from this side and 2 tabs this side, and it should be in center. इसका मतलब आप पेपर नहीं पढ़ते. Read research papers. You will find at lot many places content like this. Yeah. Mentioned below, and these are also part of the syllabus of the program. फिर यहाँ है. See, this is the parenthetical in-text citation. This is parenthetical in-text citation. This is the narrative. This is narrative. This is narrative. ठीक है. Cite direct quotes less than 40 words. तो आप ऐसे कर सकते हो. According to this is narrative in-text citation. In double quotes, you mention this and then page number. It depends upon the reference style which you are using. कि उसमें पेज नंबर आएंगे, ईयर आएगा, कोमा आएगा, नहीं आएगा, ब्रैकेट में रखना है, विदाउट ब्रैकेट में रखना है. It all depends on reference style. So you should choose your reference style, whether it is APA, MLA, or Harvard, Chicago, IEEE. Correct. Correct. In first chapter only, you have to mention
that I'm going to use this reference style throughout my research. Yes, so I have already discussed supervisor, your seniors, and then both are equally important and they will tell you. Yes. हाँ आगे आएगा वो, right. Sir, many times that it depends on the general in which we are submitting. Usually in social sciences, they recommend the ABA style. They require. Yes. Some version, dot also. But in the mathematical sciences also, they require many kind of things, particularly from computer science. They usually require IEEE, CSC. Style. हाँ. Or some different style. It depends on it. There are different style. Yes. So there are more than 1,000 reference styles available. So that's why you should make your mind that this is my reference style. Like you have your own style, you should also use your reference style. Actually, I think, sir, it is not recommended by the rule because when I am submitting, then usually there is a prescription or there is inspection from the general side. You have to write your reference in this particular style only. Otherwise, at the end, in fact, maybe sometimes in the beginning also, they don't consider. And even after if they consider, they at the end, just before submission, just before publication, they correct it. Right. So it depends upon the publisher. If he is he's going to submit it in IEEE, they will recommend that IEEE reference style you have to use for your paper. If I'm submitting it in Emerald for my library science field, or if I am submitting in Sage, they will say APA you have to use. So whatever you are going to write. Now, one more thing which you should keep in mind. Before writing a paper, you should find out the journal. ठीक है? Why? हम क्या करते हैं? We go to market, we buy our clothes, and then go to tailor. Then he stitches that cloth for us. So what we are doing? We are getting an idea that's cloth, and then we are tailoring it as per our need. मीन्स हमारा जो साइज है उस हिसाब से. बट यहाँ हम उल्टा करते हैं. हमने क्या किया? आइडिया लिया, ये नहीं देखा किसको पहनाना है, सील दिया. अब उस कपड़े को लेके घूम रहे हैं, किसके फिट आएगा, कौन सा प्रोफेसर छापेगा, कौन सा छापेगा, कौन सा छापेगा. That is the mistake. So first identify, once you get an idea, just go to journal finders. Journal finders will tell you क्या करेंगे वो. आप अपना पैराग्राफ बनाओ एक about your idea. It will tell you these are the journals which may publish your research. Now refine that. In my area, these are the best publishers. These are the best international journals. These are the national journals. 5. And then squeeze down. ये तो annually छपता है. Leave it. ये quarterly छपता है. ये bi-monthly छपता है 2 महीने में. इसको टारगेट करो. 3-4 बार भेजेंगे तो भी हो ही जाएगा 6 महीने में. और इसको हाफ ईयरली वाले में जाएंगे तो यू हैव टू वेट फॉर 6 months. So make a strategy. Now we were discussing कि 15% is only allowed. But वो 15% क्या होगा, कौन सा होगा? It depends on जहां आपने actual language use की है किसी की, अपने words में नहीं लिखा है, there you need to put double quotes. क्या कर सकते हैं quote? Everything. Statistics, opinions, words, facts, pictures, सब कुछ.
अब आपको मैं अपनी एक प्रॉब्लम बताता हूँ। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, यही मेरी प्रॉब्लम थी। देयर वाज अ टेबल, उस टेबल में सारे वर्ड्स को रेड कर दिया टर्निटिन ने। सो क्या करें? आई पुट देम दोज वर्ड्स इन डबल कोट्स, सारों को। हो गया। और मैंने तो 10% ही यूज किया था बट दैट टेबल वाज पास्ड एंड इट हैज गॉट पब्लिश्ड, क्योंकि मैंने इंटेक्स साइटेशन दिया वहीं पे लास्ट में टेबल के यहाँ पे। सो दैट्स पॉसिबल। हाँ, images. Mostly we need to use those images which are open access and which have CC BY license. So use them. Why to use a private company's logo or private company's image, which may put a case on you? Yes, if you are going to publish your paper in top journals, with top publishers, they will ask for email. Let me see the permission which you have got for this picture. So you can just write an email attaching that picture that I'm going to use this image for my research. Please permit me. If they say, please go ahead. If they say, no, you can't. Accordingly, we may take a decision. So it's a one-line email. You will have a proof. Yes. Sometimes what you have to do, you have to put 3 quotations. If you have taken some information from another source which were in double quotes, पहले से ही double quotes में थी, उसको आपको अपने उसमें लेके आना है। Then आपको एक quotation और बढ़ा देना है, triple quote. For example, ये लाइन मैंने ली, आपके जो फ्रेंड हैं उनके पेपर से उठाया आपने और अपने पेपर में आपने यूज किया, वो डबल कोट था एग्जैक्ट। वो डबल कोट आपने जब यूज किया और उसमें इंटेक्स साइटेशन आपने इनकी सोर्स का दिया, उस टाइम एक कोटेशन बढ़ जाएगा, तो ट्रिपल कोट हो जाएगा। ये इंग्लिश में मोस्टली होता है, लैंग्वेज जहाँ बार बार फ्रेजेस को यूज किया जाता है, साइंसेस में नहीं देखते। हाँ, एक हमने कर दिया कि मेरी तरफ से भी इम्पोर्टेंट है ये। हाँ, करेक्ट करेक्ट। अब ये चीजें जब आप करोगे, जैसे स्क्वीज करना, ये करना, then that editor will be impressed that he has an understanding of these things. अब होता क्या है, वो रेफरेंस एंट्री बना दी और इंटेक्स साइटेशन 4 नहीं है 10 में से, तो सिंपली ही विल डेस्क रिजेक्ट इट। डेस्क रिजेक्शन यू नो क्या होता है? हाँ, आई एम रियली सॉरी, journal, it may not be a novel idea and तो वो कारण क्या था, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी पेपर की, इस वजह से ऐसा हुआ। हाँ जी। हाँ, ट्रिपल कोट आपका हो गया, एक पर्टिकुलर सोर्स आपने ली, किसी भी पर्सन की सोर्स की, अपने उसमें यूज किया, वो डबल कोट ऑलरेडी था, देन यू पुट वन मोर कोट, दैट्स ट्रिपल कोट। Somebody quoted it and is copying it. हाँ, yes, and you put the in-text citation there. And only index citation. Or in references, what will you do? What will you do? In references, I have to give the citation of this original order or the Now, it's a good question. As a researcher, try to find out the primary source of that particular information. If you cannot find out primary source, and if you are using that information from the previous source, means secondary source, then you have to put that double quote.
एंड सिंगल कोट मीन्स रेफरेंस एंट्री में आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, वो सेकेंडरी सोर्स ही साइट करनी है, जहां से आपको मिली है इंफॉर्मेशन वही साइट करनी है। ओरिजिनल आपने देखी नहीं तो आप नहीं करना। करेक्ट। पैरेंथेटिकल एंड नरेटिव, हाँ सब में होते हैं, सारी रेफरेंस स्टाइल्स में होते हैं। उसके आपको रीजंस हैं, आपके सुपरवाइजर क्या कहते हैं, आपके पब्लिशर क्या कहते हैं, आपका जर्नल क्या कह रहा है, आपके सीनियर्स क्या करते हैं, और ये साइटेशन टूल्स हैं ऑटोमेटिक, ये कौन कौन से अवेलेबल हैं, उसमें वो रेफरेंस स्टाइल है कि नहीं है। ये सारे रीजंस हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं एक पर्टिकुलर सोर्स को चूज करने के लिए। नाउ कम्स एंड नोट एंड फुट नोट्स। नाउ इज देयर एनीवन फ्रॉम लॉ? ठीक है, they have a problem that they have to use endnotes and footnotes every time for whatever they cite. Now there is a problem that whenever this Turnitin checks the plagiarism, it do not consider these footnotes and endnotes. उसके लिए ये कुछ नहीं है, चोरी है ये। जबकि आपने वो इंटेक्स्ट साइटेशन को मानता है बट फुटनोट्स एंड एंड नोट्स को नहीं मानता। सो उस टाइम हम क्या कहते हैं उनको, स्कॉलर्स को, प्लीज इनको हटा दो, अदरवाइज ये आपका प्लेगरिज्म बनेगा। So that's a technical problem, but that's due to that software. Otherwise, legally, if we see, this is the right thing to do. As per their profession, they are using this. So footnote is something, a description about a particular information which we have mentioned in above page. That's a footnote. For example, एक paper लिखा था मैंने, I wrote a sarpanch, word sarpanch. Now a person sitting in Europe or America may not understand what is sarpanch. So I describe that in footnote that sarpanch is the head of the village of a particular village. It's a political post legalized by the government of India. ऐसे करके एक लाइन लिख दी, so a common person can understand. That was a footnote. Yes. हाँ. Now comes end notes. आपके चैप्टर के एंड में, इट में बी ए बुक चैप्टर, थीसिस, डिसर्टेशन और अ रिसर्च पेपर, उस पेपर के एंड में यू राइट एंड नोट्स. सो देयर यू कैन एक्सप्लेन समथिंग which you have discussed in your paper, but after reading the whole paper even people may not understand that thing, so you can describe that thing in a paragraph and that you call end note. हाँ, अब आपने जैसे हमने क्या डिस्कस किया, सरपंच मैंने ऊपर ही पेज में इंक्लूड किया था और नीचे एक्सप्लेन कर दिया, बट इन एंड नोट मैंने कुछ ऐसा डिस्कस ही नहीं किया जो एक्सप्लेन करूं मैं, बट जब उसका क्रिस्प है, उसकी कंप्लीट पेपर की, हाँ समरी, वो कह लो, या फिर एक उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेसिक टर्म्स में समझाना, उस लिए मैंने वो एंड नोट यूज किया। बट आपके ये लो वाले क्या करते हैं, साइट वो इस केस का हुआ, उस ईयर का हुआ, तो उनके लिए तो यही सब कुछ है। और जब हम ये कहते हैं कि ये हटा दो, तो कहते हैं हमारी लीगल ही नहीं है कुछ भी, हमारे सारे केस खत्म कर दिया आपने। राइट, सो यू मे यूज इट, you may use footnote or endnote as per the need or publisher's requirement. Yes, 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 I have used it. See, it's all about that thesis.
वहां पर क्या होता है, चेक होता है, और वो भी टर्निटिन से. टर्निटिन हैज ए प्रॉब्लम, but our papers are in India or across world. One this plagiarism software is being used that is called iAuthenticate, which is also owned by this Turnitin. So that checks that, and according to that, it's fine. And most of the books we find that, say, for example, I am reading a book for business mathematics. I understood it. So let me answer. Yes. In appendix, for example, I wrote my thesis, master's thesis, that was on digital preservation, and there were 64 tables. And I have used 5 main tables in my thesis, and those 59 tables I used in appendix. That was part of my research. But in end notes, we are just writing 2-3 lines about something. That's it. That's the difference. So in appendix or annexures, crucial information which you could not provide in your main part, you say if somebody have time, you may go on reading it. Otherwise, it's fine. But sometimes we are defining that we can put in. Yes, to understand that concept. Reference may not be that relevant in your Paper, yes. Yes, yes. As a reader, you should understand the whole paper. So as a writer, it's your duty to make a reader understand that thing. I have used it in one research paper. That's it. In my research dissertation or thesis, I haven't used it because we have other options, annexures, appendix. So This paper reading goes with flow. So if you write in the end, then yes, yes. paper. That's why those concept is there. Otherwise, when we given in the end with the reference or something like or a position kind of. Okay. It's required when we are sitting, we don't want to refer to go left side down. All right. So these are the reference styles. Those of you who want to understand these reference styles, APA means American Psychological Association, MFA Modern Language Association, Harvard style. This is our style. Do you know? Indian Bibliographical Standard. It's our style, adopted by International Standards Organization. As he said, IEEE, CSC, or American Mathematical Society. Yes, these reference styles are being used. There are more than thousands of reference styles are there. So I'm just mentioning only few which are very common. Chicago style, IEEE style, and this style. So these are the most of the subjects which it covers. But APA is used by most of the subjects. Okay, so you know which is your reference style now? Or you may take your time. Which one? Yes, Indian Bibliographical Standard is adopted by International Standards Organization, and it covers all subjects. It provides you 3 options. 3 options means American Psychological Association, which provides information in brackets, surname, comma, this year. And then there is another style which is mostly used by Indian journals. That's you put numerically 1, 2, 3, 4, 5, and then reference entry
like that. That option is also provided by this. And there is another one which says this Chicago means page number, surname, year, page number, detailed information. That's why it should be used everywhere. But why it's not being used? I made a study. What was the outcome? No tool, no software, no publisher has accepted it. Why? Publisher is going to use only those reference styles which are common to masses. If you have heard for the first time, you may reject that journal. वो reference style ही कहीं नहीं मिल रही है, उसका manual नहीं मिल रहा है कहीं. So you will reject that journal क्योंकि there are more than 10,000 journals in Scopus. वो 10,000 आपके पास तो ऑप्शंस एंड ऑप्शंस हैं. आप उस जर्नल पे क्यों जाओगे जो इंडियन बिब्लियोग्राफिकल साइटेशन या स्टैंडर्ड को मैंडेटरी कर रहा है, राइट? सो दीज आर द मैनुअल्स. ये है कौन सा है, ये दिख रहा है? एपीए 7, CSC 8, Chicago manual और manual for writers, Chicago style. और ये MLA 9 चल रहा है अभी लेटेस्ट और APA 7 चल रहा है. These are available freely on internet. You just write PDF and that manual, you'll get it. If you won't get it, this is the site. No one else. Sir, suppose we have ABA 7 style in Word, can we convert it to LaTeX from any of these? Yes, for that you have to use EndNote or Zotero. Will it type or we can directly convert? You have to install that software and then you can do it. We'll convert directly. Yes. This is very hot topic. How to cite artificial intelligence. You put a query in OpenAI, ChatGPT, या किसी में भी डालिए आपने. So let's discuss about ChatGPT. This is called personal communication. Personal communication क्या है? It says whatever, for example, आपने कहा let me know various types of chairs. जो आंसर आपका था वो आंसर आपका नहीं होगा. So there is a difference made by that ChatGPT. It's a personal communication. So we cite like इधर है OpenAI personal communication and dates. OpenAI and then personal communication January 16, 2023. You can in text cite that thing कि मैंने ये यहाँ से लिया है. ये APA. अभी वाले में शायद ना हो क्योंकि वो ये तो 23 में स्टार्ट हुआ है अपना ChatGPT. ठीक है. Dalhousie University also provides detailed information about APA, MLA, Chicago, Vancouver, CSC, McGill. You can go and explore. It is APA style explained like this is a reference list. So this is called hanging style. Hang कर रहा है ना वो, ये खराब है ना. इतना ये करना पड़ता है. So you can choose another style जहां ऐसा ना करना पड़े.
न्यूमेरिकली कर सकते हो। उसमें वो है कि आपको ऊपर करना पड़ता है 1 2 3, राइट। आई शेयर पीपीटी, आप ये देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं। नाउ इज द इम्पोर्टेंट थिंग, अपना समय होता जा रहा है, राइट। नहीं, टाइम तो दूसरे लेक्चर के लिए है। अच्छा, ठीक है, 9 मिनट्स में कवर करते हैं। So these are the various online tools available for your help in your research. There is a grammar checker, paraphraser, citation manager, citation checkers, citation generators, plagiarism checkers, and proofreading service providers. And these are all AI tools, right? Now let's check out citation generators. There are two things: reference managers and quick citation generators. Reference managers are those tools which manage your references, bibliography, your resources throughout your life. जब तक आपका अकाउंट रहेगा वो मैनेज करेगा, वो मैनेजर्स होते हैं। आप जैसे 2011 में मैंने एमफिल की थी, उस टाइम का भी मेंडले में मेरा सारा डाटा पड़ा हुआ। दोज आर कॉल्ड रेफरेंस मैनेजर्स। बट ये क्या है, आपके क्विक सॉल्यूशंस देते हैं, क्विक साइटेशन जनरेटर। आपको अभी होल नाइट बैठ के नेक्स्ट डे सबमिट करनी है, ये ही आपको काम आएगा। ये क्या करेगा? इजी गिव है, माई गिव है, साइटेशन मशीन है, जोटेरो गिव है, स्क्रिबर है। आई लाइक स्क्रिबर। ये क्या है, आपको कहेंगे क्या बात है, 1 2 3 8 9 होते ही बंद पे सो वो आपका मन नहीं करेगा। सो स्क्रिबर आप काफी इन टेक्स्ट साइटेशन एज वेल एज रेफरेंस एंट्री आपके लिए बना देगा। नहीं, प्रो होता है बट उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, अपना काम आप निकाल लोगे, 4-5 पेज जो हैं वो लिख लोगे। क्या? हाँ, अब आपको क्या करना है, जैसे क्विलबोट है, ग्रामरली है, यू कैन यूज देम फॉर ग्रामर चेक। वो आप एक्टिवेट कर लो ब्राउजर से ही, तो नॉर्मल चीजें आपकी होती रहेंगी सेट। हाँ, नहीं क्विलबोट भी। हाँ, बट अल्टीमेटली अगर आप ये एआई टूल्स यूज करोगे, दे आर गुड, बट आपको फिर से लिखना पड़ेगा उसको, ह्यूमन इंटरवेंशन। मैंने क्या किया, स्मार्टनेस दिखाई, पूरा पेपर इतना, इट टुक 3-4 मंथ्स लिखने के लिए, और वो क्विल बोर्ड पे चढ़ा दिया, एंड जो रिजल्ट आया बहुत क्लासिक था। बट वो लैंग्वेज ऐसी थी, वो एसी को एयर कंडीशनर समझ रहा है, मेरा एसी कुछ और था, तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया उसमें। पूरे को खत्म करके फिर से लिखना पड़ा, और प्रॉब्लम क्या हो गई, वो वहां ऊपर चला गया, मीन्स इट इज ऑन इंटरनेट, प्लेगरिज्म है, आपकी मेहनत खत्म। उसका भी सॉल्यूशन है। जैसे चैट जीपीटी से मैंने एक टेबल बनाने के लिए कहा, इट हैज मेड टेबल, इतना इट्स अ बिग टेबल, 10 columns each side, 10 columns each side, and I explained everything. These are the 10 columns in vertical, these are 10 columns in horizontal, and please discuss or compare these 4 tools. Within 2 minutes, done. And what I did, नहीं बताना चाहिए, मेमोरी में गया, सेटिंग्स में जाके डिलीट मेमोरी, विद इन 1 सेकेंड जैसे वो किया तो क्या होगा, उसकी मेमोरी डिलीट हो गई। नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसा क्वेश्चन उससे पूछोगे, उसको नहीं पता, वो दूसरा आंसर देगा,
एंड वो इंटरनेट पे भी नहीं है। तो वही मैंने प्लेगरिज्म पे चेक किया, देयर वाज नथिंग। नहीं आप मेमोरी उसकी डिलीट कर सकते हो, हाँ उसी टाइम, लेकिन आपने कुछ समय लिया आराम से, तो इंटरनेट इज वेरी फास्ट। देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल यूजिंग इट। अगर सेम इंफॉर्मेशन कहीं और आ गई तो उस वो सिमिलरिटी टर्निटिन आपको दिखा देगा। ठीक, में जो डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, हाँ तो उससे भी सिमिलरिटी चेक करना होगा। अब इसमें हम Somehow I am not able, and at that time I didn't delete at that time. So in my patients, he was matching one slide. And then after very part, I deleted and then I. stopped it. But that is what it is. वो दूसरे के आगे नहीं, यहाँ तो दूसरे आगे नहीं कर रहे हैं। And that my अच्छा। that जा रहा है, बट आप नहीं, थोड़ा संभल के करना चाहिए, दैट्स इट। अदरवाइज आप तो साइट कर रहे हो, अगर इफ यू आर साइटिंग समथिंग, इसके लिए पेपर पाल है, पेटल है। पेपर पाल, इट्स ए AI टूल। पेपर पाल, पेटल, एंड देन साई स्पेस, SCI स्पेस, साई स्पेस। ये क्या करते हैं, विथ रेफरेंसेस आपको वो लिटरेचर ढूंढ के देते हैं। साई स्पेस, पेटल, PETEL, TAL, पेटल, एंड पेपर पाल, साई स्पेस, पेटल। हाँ जेनी है, जेनी, JENNY, जेनी.ai। अभी तो AI का जमाना है, एज ए रिसर्चर, समराइजर, सब कुछ वही कर रहे हैं। हाँ अब टर्निटिन AI दिखाता है 80%, वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। राजेश, ये साइट कैसे वहां आ सकती है? साइट है जैसे स्क्रीपर। हाँ हाँ, यही जाने से शायद वो डबल करने से आएगा ना। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? यस, आपको क्या करना चाहिए, इफ यू हैव लैपटॉप, डाउनलोड जोटारो मैनेजर, and there is an extension, word extension. You could also download that, and it works very fine. Means आपको जो in-text citation वो इन ब्रैकेट्स में करके वो ऑटोमेटिकली वो ब्लू करके भी दिखाएगा, क्लिक करते ही वो सोर्स पे जाएगा, जैसे आपके मेन रिसर्च पेपर्स होते हैं वैसे। जोटारो इज द बेस्ट। क्या किया है वो जोटाई जा रही है। नेक्स्ट वाला हो क्या टेस्ट के लिए निकलना है कॉलेज में, फिर इसमें क्लिक होती है। ठीक है, थैंक यू। क्या पढ़ा? वो लाओ, दो तीन जो यहाँ पे विंडो खुलते हैं वो लाए। वो कैसे आता है भूल गया। कोई नहीं, टेक आउट योर मोबाइल। अरे 3-4 मिनट। हाँ हाँ, सब देख लो।
SCRI कोई दूसरी विंडो आ रही है ना, वो विंडो पे खुलते थे 3-4 विंडो। SCRI BER राइट क्लिक करवाएंगे कभी तो खुल जाता है। अब इसमें आप गो टू citation generator. Citation generator. Now search. Go to search. Yes, just type India 2020. एक्सटेंड कर दिया था ना India 2020. Search. मैंने एक्सटेंड It will show you all the options of books, articles, एक्सटेंड उधर एक्सटेंड हो गया आगे चलिए। क्या इशू है? आ गया? चलो यहाँ देखते हैं. So it shows 3 options. Plagiarism check, proofreading, citation generator. हाँ. Hmm. Choose your reference style. Basically, it provides many reference styles. Here, if I put, so it's American Mathematical Association, 11th option. So I will go with the APA, India 2020. नीचे अब ऑप्शन शो करना चाहिए. कर रहा है? इसमें थोड़ा स्लो है. हाँ, अदरवाइज ये ऑप्शन शो करेगा एंड हाँ नीचे ड्रॉप डाउन में आएगा. यू कैन सिलेक्ट एनी ऑप्शन. ठीक है, लेट इट वर्क. हम वापस यहाँ जाते हैं. So these are the 3 reference managers. कौन सा यूज करते हैं आप लोग? EndNote. Which college? University? Is it free? Paid version, right? Yes, license. Rich people. So mostly we use Mendeley or Zotero. Both are open source and you can download or you can just use it through browser, your own browser. आपको करना क्या है? You can choose one of them. For example, you chosen Zotero. Zotero, download it in your laptop, or you can just open Zotero manager and then integrate it with your Word. So whatever you write there, it will integrate with your in-text citation. ये कैसे होगा? ये आसान है, बट वो करके देखना पड़ेगा. उसमें थोड़ा 1-2 घंटा आपको ट्राई करना पड़ेगा एंड इट्स इजी. ये कोई बड़ा चीज नहीं है कि ये कैसे करेंगे. राइट? हाँ, जो आप अभी कह रहे थे, इंपोर्ट साइटेशंस इन RIS एंड बिबटेक्स फाइल्स, ये सब कुछ तो होता है. लेटेक्स तो फिर वर्ड और लेटेक्स वो सिमिलर चीज हो गई. वो कन्वर्ट कैसे करेंगे?
वो आपके एंड नोट में तो ऐसी फैसिलिटी मुझे लगता है। हाँ, बिबटेक्स फाइल। हाँ, तो ये सारी ऑप्शंस आप मेंडले और जोटेरो और एंड नोट तीनों ही देते हैं। और आपका स्क्रिबर भी देता है .ris फाइल। बट देर इज ए प्रॉब्लम। इज देर एनी प्रॉब्लम विद द साइटेशन जनरेटर्स? जैसे अभी आपने यूज किया इसको, you may say that it whether the citation or reference entry created by that particular citation tool, is it correct? It is correct, but 95%. But human intervention is must. Is that's why you should know your reference style. At least आपको ये पता होना चाहिए बुक की एंट्री ऐसे लिखते हैं. If you are writing a research thesis, there also you mention that this is the example of book, this is an example of research paper. That's how I am going to cite. So you should know, and then you can just check कि जो उसने रिजल्ट निकाला वो सही है क्या, उस हिसाब से. हाँ, यहाँ मैंने एक ये स्क्रीनशॉट है. इट्स अ रेफरेंस लिस्ट इन एंट्री, ऐसे दिखा देगा आपको करके. कॉपी टू क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड इसको आप कॉपी कर सकते हो वर्ड में अपना जहां बिब्लियोग्राफी बनाते जा रहे हो. और या फिर यहाँ पर आपके सारे नीचे बनते जाएंगे. फॉर एग्जांपल 30 है आपके रेफरेंसेस पेपर के, यहीं पे हो जाएगा. विद इन 1 आवर काम खत्म. ये है आपके पैरेंथेटिकल साइटेशन, ये है नरेटिव साइटेशन. दोनों ये जो APA 7 में बनाते इसमें देख लो, इनको भी आप कॉपी कर सकते हैं. ये रेफरेंस एंट्री हो गई, इसको आप कॉपी कर सकते हो. ये कैसे आया? ये अगर चल रहा होगा तो हम देखते हैं वापस. यस, ये आ गया. आई जस्ट टाइप्ड इंडिया 2020, चला गया. हाँ, ये आ गया. दिस इज द बुक और दिस इज द जर्नल आर्टिकल विच आई एम गोइंग टू साइट. आई क्लिक इंटर और जस्ट क्लिक साइट. ये क्या करेगा? इट विल शो यू. It will show you the reference list as well as in-text citation. अब ये कह रहा है, ये आ गया. देखो आ गया, ये नीचे आ गई. इफ यू गो अगेन टू द सर्च बॉक्स, वहां आपने कुछ और देखा, यहाँ नीचे आ जाएगी, लिस्ट बढ़ती जाएगी आप. किसमें? ये वाले. हाँ, ये साइन अप आप कर सकते हो, बट ये जितने ज्यादा दिन होंगे आपके फिर पैसे वगैरह जेब जेब भी कर लेना. राइट. फिर वापस आते हैं इसका. अच्छा अच्छा, अभी कर. So this is how it provides you the information. It also provides you this information: proofreading, editing, checking the citations, paraphraser, grammar checker. But be careful. इसलिए मैं तो यूज नहीं करता हूँ. आई डोंट ट्रस्ट देम. वो सारी चीजें इंटरनेट पे जाती हैं. और इफ इट इज योर PhD thesis, don't do it. If it's something which you are trying, just do it. Jotaro is safe. हाँ, उसमें कोई, उसमें आप ये Jotaro do not provide these options. Jotaro just provide you the reference list. That's it. Then there is a MyBib. It's another site
MyBib. You can search MyBib. This is very easy. Here you can also, for example, after searching in inbox, you do not find that source online. आप लाइब्रेरी गए, पुराना सा रिकॉर्ड निकाला, उसको आपको साइट करना है. Then just add citation, manual citation. So as per MLA, as per APA, as per Chicago, it will create it for you. तो ये भी अच्छा है. क्या इश्यू है? Just you need to fill up that form. जो ये फॉर्म आएगा, that you need to fill up. जोटेरो बिब. एक है जोटेरो रेफरेंस मैनेजर, एक है जोटेरो बिब. इट्स अ क्विक साइटेशन मैनेजर, जो आपकी सेविंग 10 दिन के लिए, 10 साल के लिए यहाँ नहीं पॉसिबल है, बट ये 1 आवर जॉब आपका आराम से कर सकता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेम चीज है, आई सर्च इट बाय यूआरएल. जैसे आपने कोई वेबसाइट को साइट करना है, जस्ट पुट दी वेबसाइट हियर, साइट्स आपका यहाँ पे ऐसे बन के आएगा. क्लिपबोर्ड डिलीट बिब्लियोग्राफी मींस यहाँ पे आपकी वो लिस्ट बनती रहेगी. सिंपल है. और if you are in library and it's not available online, that do manual entry. उसमें भी एक फॉर्म खुलेगा और वो हो जाएगा. So if you have any questions, you may ask related to this presentation. Yes, but I must say use Scribber as well as Zotero, both, or Mendeley, 3. Scribber is safe. AI tool, summarizer, grammar checker, those are. Here you can see we are going to exclude these references or bibliography, so we need not to worry. आपने तो कर दिया, बट जो बैठे हैं पब्लिशर्स, they will check it. हाँ. मेरा लैपटॉप नहीं है, but I'll share one video which explains everything. Means you just need to go to internet, type Zotero manager, you install for Windows, then one thing is done, and then you integrate with your Word. You go to Word, then just extensions, click Zotero extension. It will be added. Sometime it may not be added. That's a practical problem, but try 2-3 times, it will be added. And then after video, seeing that video, you can work. It's not tough. I was also thinking it was tough, but I did it on my computer, because earlier I used to use Mendeley since my 2009-8. I'm using Mendeley, but recently I used Zotero also, so it's also good. All right. First, for short-term task, use these Scribber, EasyBib, MyBib, BibMe, and if you are a research scholar. All right. So you can also use this Mendeley. Download it. It takes hardly half an hour to just manage things and then start working. ठीक है. Our next lecture will be on these indexing databases, Scopus, Imago, Web of Science, as well as I'll
mostly take these H index, impact factor, SNIP, G index, like that. Because as a researcher, you need to understand what these things are, why these parameters are being used, how our performances are being judged by various parties. Okay, thank you very much. You want to ask? Okay. We're taking 5 minutes. Huh.
टेक्नोलॉजी में भारत का
7-day faculty development program on research methodology. Now, as we just said, the last session, it was very, very innovative and informative, talking about the artificial intelligence tools and citation and referencing tools. Now we move on to the next session, again chaired by Mr. Vikas Kumar from the Central University of Haryana. I invite you, sir. Mr. Naresh Kumar, sorry. So now we are going to cover various research matrices, means how we perform, how we judge performance of our research or of a author of a particular research article or any information source. And then what is H index, what is impact factor, and what are the various performance indicators. So to know this, we must know that our research productivity, whether it is qualitative, whether it is a quality research or not, that is being judged by various indicators, various people around our academic community. So, for example, quantity of the paper published और क्वांटिटी आप जब कहते हो ये इतने पेपर मैंने पब्लिश कर दिए, क्वालिटी कितने साइटेशंस आए, दैट्स हाउ यू जज योर पेपर्स. अगर आपके 50 पेपर्स पब्लिश्ड हैं, दैट मींस good number. Okay, he's a good publisher, I mean writer. But if you say on those 20 papers or 50 papers, he has got 2,000 citations or 5,000 citations, 15,000 citations. That shows the quality. Citations means those many people have cited your content, your 20 papers content in their own papers, own research. That is called citation. So if the number of citations increases, the quality of the author writing is being judged, means that's good. So now number of citations, 5,000. Impact factor, how much impact your research is making in the whole research community. H index, impact factor होता है आपके जर्नल का, right? पेपर का. The research article which I have published was in maybe SLib. It's a journal published by Elsevier in Library Information Science. So it has impact factor of 2.5, for example. That shows it's a good impact factor. There are journals which have 0 impact factor or do not have impact factor, because impact factor comes after 2 years or 5 years. And there is a criteria to judge any article, this journal. If a journal is indexed in Scopus, it means that journal is already, have started its journey since last 5 years. So after 5 years, you can make an entry in Scopus. A publisher can just say that this college, इस college का एक particular journal चल रहा है, and after 5 years, they can approach Scopus that please index means उस list में please include our journal as well. So what this college has to do, they have to follow all guidelines and then submit the journal with 2-3 issues of that particular journal. उससे क्या होगा? They will judge the quality. कितने citations आए last 5 years में?
कितने ऑथर्स थे, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स छपे, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट कितना क्रिएटिविटी आया, व्हाट सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड, तो सब कुछ सोच के व्हाट इज द आउटपुट, इट हैज बीन इंडेक्स्ड इन दी स्कोपर्स। उससे क्या हुआ, इम्पैक्ट फैक्टर उसका 0 इम्पैक्ट फैक्टर है, just include interior people. That is called quality 4 papers. Quartile 4 भी उसको बोलते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4. There are 4 quartile categories जिनमें पेपर्स को डाला जाता है। आप अगर कैरियर का स्टार्ट कर रहे हो, Q4 में अपना पेपर छपवा लो, इजी है। Q4 भी खराब नहीं है। Q4 क्यों खराब नहीं है? If it is indexed in Scopus Web of Science, then it shows it has a quality, that standard is there. But वो impact factor कब आएगा? जब वो index होने के 2 साल बाद impact factor उसका आना शुरू होगा। 5 years के बाद 5 year impact factor आएगा, और फिर आप कह सकते हो इसका 0.75 impact factor। ठीक है जर्नल, क्योंकि उसकी लाइफ कितनी छोटी है, इट कैन नॉट क्रिएट इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए आपको यूनिट टाइम। सेम केस इज विद दिस जर्नल। देन एच इंडेक्स, इट इज रिलेटेड विद द ऑथर हु हैज रिटन दैट आर्टिकल, उसका क्या क्वालिटी है, वो हम कैसे नापते हैं? थ्रू एच इंडेक्स। And then item index, I'll explain them one by one. So these are the 3 main databases which do this. Citations बताएंगे आपको, impact factor बताएंगे आपको, H index बताएंगे, item index बताएंगे, alt matrix नहीं बताएंगे, ये बता देंगे Google Scholar। So ये परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को आपको बताएंगे। साइटेशंस तो हर किसी चीज के लिए चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आई विल शो यू। यहाँ देखो ये यूज हुआ है। हाँ, I'll also tell you which is the site which will give you an idea। ये जर्नल बेस्ट, ये रैंक क्वालिटी जर्नल रैंकिंग होती है, कंट्री जर्नल रैंकिंग होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। दैट इज कॉल्ड साई मागो जर्नल रैंकिंग। उस साइट को कंप्लीट देखेंगे। दिस इज what I have already explained. These are the research matrices which tells the performance of a individual author or a particular journal. And that's how we come to know whether a particular author is a quality author or particular research journal is a quality journal. जैसे इम्पैक्ट फैक्टर जिसका फॉर एग्जांपल 41 इम्पैक्ट फैक्टर है, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का जर्नल है, लेटर्स ए लेटर्स बी दोनों जर्नल्स का 41 है। इम्पैक्ट फैक्टर में अगर आपका पब्लिश हुआ तो क्या होगा? प्रेस्टीज, यू आर द बेस्ट रिसर्चर अमंग द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। हमारे जो वीसी साहब हैं उनका 41 लेटर्स बी में छपा है, तो ही इज गुड रिसर्चर। छाप सकते, वो तो आप ऐसे होता है करियर में, आपने एक बेस्ट काम किया, ऐसा होता नहीं है ना, वो नेक्स्ट टाइम नहीं छापेगा। उस लेवल की रिसर्च आपको उससे भी डबल करनी पड़ेगी, देन इट इज पॉसिबल। आप नेचर में छपवाओ, नेचर जर्नल 10 lakhs का सिंगल इश्यू आता है, तो उसमें अगर छप गया तो हाँ। अब जैसे अब हम लैंग्वेजेस की तरफ आते हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की तरफ आते हैं, वहां अगर 1 इम्पैक्ट फैक्टर में भी छपवा दिया
तो इन इंटरव्यू यू विल बी रिस्पेक्टेड, गुड रिसर्चर, क्योंकि वहां 2.5 तो मैक्सिमम है, तो मैं 41 को और 2.5 को इक्वलेंट मानूंगा। द प्रोफेसर ऑफ हिंदी एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इज इक्वलेंट, उनका उतना ही है, क्योंकि एल्जेवियर ये जो हाइक बनाई है इन्होंने पैसे लूटने के लिए, तो वो सब उस वर्ल्ड ने बनाई है, right? But we know as a academician that this 2.5 impact factor or H index is highest in this field. So as an expert, I select him. वहां पे you can make a decision. For commerce, कॉमर्स में अच्छा है, 8-9 तक जाते हैं, 9 इम्पैक्ट फैक्टर है जर्नल। क्वालिटी मैनेजमेंट एल्जेवियर का है, सेज क्वालिटी, सेज, स्प्रिंगर, एल्जेवियर, इमराल्ड, 4 तो बेस्ट पब्लिशर्स हैं। ट्राई इन देम ओनली। टाइप ऑफ रिसर्च मैट्रिसेस, नाउ फॉर एवरीथिंग वी हैव रिसर्च मैट्रिसेस। आर्टिकल, कोई भी रिसर्च आर्टिकल है वो कितना क्वालिटी वाला है, वो कैसे जज होगा? साइटेशन काउंट कैसे, कितने आए, पेज डाउनलोड, पेज व्यू, यही होता है ना। आपकी फेसबुक प्रोफाइल है, व्हाट्सएप का स्टेटस है, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने कमेंट किया, उससे पता लगता है। मैं तो टॉप पे हूँ आज, राइट? 230 लोगों ने मेरा ये देखा और 30 कमेंट आए, यू बिकम हैप्पी। वही चीज यहाँ लानी है राइट? आपके उतने ही साइटेशंस आने चाहिए उस पेपर पे, रिसर्च आर्टिकल पे, देन यू वुड बी हैप्पी टुवर्ड्स योर रिसर्च वर्क। यस, मेरा कुछ हुआ। ऑथर मैट्रिसेस, फोकस ऑन ऑथर, इसमें क्या होगा? आपका एच इंडेक्स है ना। बुक मैट्रिसेस, आपके बुक रिव्यूज आ रहे हैं, बुक साइटेशन काउंट्स हैं, उससे जज होगा। देन जर्नल मैट्रिसेस, जर्नल अभी इम्पैक्ट फैक्टर उसका कितना है, रैंकिंग क्या है। एंड देन अल्ट मैट्रिक्स, ये आपके जैसे फेसबुक पे आपने शेयर किया, इंस्टाग्राम पे एंड व्हाट्सएप स्टेटस पे, आपका खुद का रिसर्च पेपर, यू शेयर्ड इट, देन वहां जितना भी वो मिलेगा, व्यूज मिलेंगे, डाउनलोड्स मिलेंगे, उसका भी एक मैट्रिसेस है, दैट इज कॉल्ड अल्ट मैट्रिसेस। This is a good graph to understand. Citation matrices, citation समझ में आ गया कि कितने लोगों ने आपका वो पर्टिकुलर चीज यूज की, देखा, ये डाउनलोड किया। बट साइटेशन तब होता है जब उसको इंटेक्स साइटेशन भी देके और रेफरेंस एंट्री दे देते हैं। इसमें वो चीज इंक्लूड नहीं है जो संडे को हमने काम किया था, वो पढ़ा जरूर था बट इंटेक्स साइटेशन नहीं दिया था, रेफरेंस एंट्री में नहीं दिया था, बट दैट वाज पार्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी। बट आपको साइटेशन नहीं मिलेगा उसका, साइटेशन तभी मिलेगा जब इंटेक्स साइटेशन होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक दूसरे का भला करें, इंटेक्स साइटेशन यूज करें। देन ये गूगल स्कॉलर हो गया, वेब ऑफ साइंस हो गया, एंड स्कोपस। इसका जो होता है गूगल स्कॉलर मैट्रिसेस, ये H5 मीडियन और H5 इंडेक्स, ये दोनों टाइप के पैरामीटर्स हैं जिससे आप जज कर सकते हो। एवरीबडी हैज प्रोफाइल ऑन गूगल स्कॉलर, किसका नहीं है? सो सैड। आज घर जाते ही, सिंपल है, इट विल टेक 2-3 मिनट्स, क्रिएट, ओपन योर ईमेल आईडी। ठीक है, सबसे पहले जो भी डिवाइस है, फोन भी हो सकता है और आपका लैपटॉप भी हो सकता है। ओपन योर ईमेल आईडी, जीमेल वाली, एंड देन टाइप गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर, वहां साइड में जाना, माई प्रोफाइल, यू विल क्लिक इट,
वो कुछ कॉलम्स ऑटोमेटिकली भर जाएंगे, सबमिट इट, आपकी प्रोफाइल बन गई। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंपोर्ट योर पेपर्स जो स्कोपस में, वेब ऑफ साइंस में ऑलरेडी पब्लिश्ड है, वो आपके इंपोर्ट हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, you should have profile on Scopus, you should have profile on Web of Science, अगर उसमें आपके पेपर्स पब्लिश हुए हैं तो। अदरवाइज आपको मैनुअली एंट्री करनी पड़ेगी उन सारे पेपर्स की। देन व्हाट इट इज गोइंग टू शो यू द कंप्लीट फिगर। मैं आपको वो शो करूंगा एक, ये कैसे शो करता है। देन वेब ऑफ साइंस विथ अनदर डेटाबेस, ये क्या करता है, इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर, आप ये मत बोलना कि एक ऐसा जर्नल है जो कि वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर है, यू आर राइट। बट एक ऐसा जर्नल है जो स्कोपस में इंडेक्स है और वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स नहीं है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर 4 है, दैट्स रॉन्ग। उसका क्या है, साइट स्कोर 4 है। कंपनीज हैं, नाम चेंज कर दिया, बात वही है, राइट। ये वेब ऑफ साइंस मीन्स इम्पैक्ट फैक्टर, स्कोपस मीन्स साइट स्कोर, स्कोपस मीन्स साइट स्कोर। इट आल्सो प्रोवाइड्स, तो स्कोपस है SJR एंड SNIP, ये हम आगे वो डिस्कस करेंगे। साइन ऑफ जर्नल रैंकिंग, इस साइट को खोल लेते हैं एक बार। अरे फिर सेम प्रॉब्लम है, इसमें शो कर रहा है राजेश, इसमें शो कर रहा है और उसमें नहीं कर रहा। ठीक है, रिमेंबर दिस साइट, साई मागो ar.com. What it provides ranking of all journals of all subjects which are indexed in Web of Science or Scopus or Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, Social Science Citation Index, जितने भी इंडेक्सेस हैं तब का। कोई जर्नल का नाम, एनीवन जो हाई फाई हो, सेंट्रल रिव्यू, यूके बायोमेडिकल सेंट्रल लिमिटेड सिस्टमैटिक रिव्यू, सेंट्रल, ये है। ये थोड़ी एड्स आती हैं इसमें, डजंट मैटर। So it says this, publisher Elsevier, subject economics, econometrics, finance, economics and finance. It's a journal. This is the ISSN number. SJR 2024 की Q2 क्वालिटी में है ये, और H इंडेक्स इसका इक्वल है। कवरेज 2016 से लेके 25 तक है। दिस इज द होम पेज, ये इसका स्कोप है।
ये कोरेटाइल्स। आप ये देखोगे कि फाइनेंस में Q2 Q3 में चला गया, देखो अभी ये इट हैज इनहेंस्ड, हाँ अब Q2 में आ गया, फिर वापस Q2। सो ये एक पैरामीटर शो कर रहा है कि ये जर्नल ने कैसे परफॉर्म किया है इन लास्ट 5 years। हाँ ये देखो ये Q2 था, यहाँ पे Q2 था, फिर Q3 आ गया, Q3 आया 2 years। हाँ। नहीं, आपका जिस ईयर में था वो उसी टाइम का होगा, काउंट होगा। हम्म। That will be considered as like how gain based on See, in case of recruitments, what happens is you have submitted your paper. I mean that this is my top 5 papers, and you say now you have to submit the proof. Now the present situation is what you can take print out and just attach. So that is the reality. It doesn't matter if you are a quality researcher, that doesn't matter. In interview, you'll speak. Many times they violate the rules also. This is the major. If they publish one party. So the completion is so. So if you are an expert, if you are an expert, you should know that this is a quality journal. Just go for it. It doesn't matter. वही बात है कि वो 2.5 वाला प्रोफेसर इज आल्सो द सेम पर्सन, equivalent person. So this is the different graphs it shows. Citations per document, citations per इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इससे आपको ये जज कर सकते हैं कि कितना इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, नाउ कम टू दिस journal ranking. Now, if you want to see in your subject, what is the top 10 journals, top 10 international journals, top 10 national journals, वो ये बताएगा। Indexed in Scopus Web of Science. और ये शो करेगा आपको Q1, Q2, Q3, Q4, ये 4 कहाँ होते हैं? सिर्फ स्कोपस में। दैट्स इट। सब्जेक्ट एरिया, चलो आप बिजनेस मैनेजमेंट ही लेते हैं। सब्जेक्ट कैटेगरी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, सो इन 2024 अगर एक साल का हम रैंकिंग देखें, देन इट सेज 139 जर्नल्स, नहीं 139 पेजेस हैं
और ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो कंप्लीट डाटा। सो टॉप 10 जर्नल्स ये रहे, ये यहाँ तक। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट, जर्नल एंड हॉस्पिटैलिटी, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, यूरोपियन जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये भी शो कर रहा है, ये सारे Q1 हैं और ये इनका एच इंडेक्स है, ये टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड इन ईच जर्नल, एंड देन इन 3 years ये है टोटल रेफरेंसेस इसमें इतने आए। ये देखो ये भी बता रहा है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, जितने ज्यादा रेफरेंसेस होंगे, जितना आपका क्वालिटी वर्क होगा, उसमें आप प्रूफ प्रोवाइड करोगे। तो ये भी ये शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो जर्नल है, जर्नल ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट, हैज 919 ना 1790 रेफरेंसेस ओनली। और दीज आर साइटेशंस, साइटेशंस डिसाइड करता है कि ये जर्नल कितना पढ़ा गया है। ठीक है, ये इट आल्सो टेल्स यू द कंट्री। ठीक है, अब लास्ट 5 years के भी आप टॉप 5 जर्नल्स देख सकते हो। ये जितने भी फिल्टर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हो। अब आपको सिर्फ ये करना है, इंडिया, इंडिया नहीं है, एशिया है, एशियाटिक रीजन, इंडिया भी है। ग्लोबल जर्नल ऑफ फ्लेक्सिबल सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट, ये Q1 जर्नल है। तो ऐसे भी अगर आपको फिल्टर करना है, इसमें इंडिया भी ऑप्शन आएगा, तो एग्जैक्ट इंडिया वाले जर्नल्स ही आप, इंडियन जर्नल्स को आप प्रेफर कर सकते हो। हाँ, परसेंटेज ऑफ फीमेल राइटर्स, so 27%, 37%, 26%. Now, if country wise, if I want to know, ये रहा, so it shows current data now. It says USA में कितने डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए हैं, कितने साइटेशंस मिले हैं, कितने साइटेशंस मिले, ये साइटेबल डॉक्यूमेंट्स थे, ये सेल्फ साइटेशन है। डू यू नो व्हाट इज सेल्फ साइटेशन? अपना प्रीवियस वर्क साइट करना, बार बार करना। 4-5 पेपर पब्लिश हुए, उनको हर पेपर में फिर से साइट कर लो, तो माई साइटेशन विल इंक्रीज। ठीक है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कंसर्न है तो करना चाहिए, अदरवाइज अच्छा। बट कुछ ऐसा कंटेंट है जो प्रीवियस पेपर में था, बट मेरा ही कंटेंट है, मुझे लिखने से कौन रोक सकता है? बट मेरा ही पेपर था, मैंने ही वो किया है, कॉपीराइट्स तो मेरे नाम है, रिसर्च आर्टिकल के तो मेरे ही पास होते हैं, बुक की छोड़ो। आपने उसको पब्लिश किया तो ऑब्वियसली दैट इज एक्सेप्टेड किया है वर्क है। तो आप कोई और काम कर रहे हैं तो वो एक पैराग्राफ ही तो लिया है तो इसका मतलब यह है कि सेल्फ प्लेगरिज्म हो जाएगा, वो सेल्फ प्लेगरिज्म हो जाएगा। इसलिए अपना भी जो पब्लिश वर्क है, चाहे मेरा है या किसी का है, वो आप ये समझो कि वो पब्लिश्ड है, उसको जब भी करना है इंटेक्स साइटेशन रेफरेंस आना ही चाहिए। और आपके काम का है, चाहे आपको खुद का हो, साइटेशन बढ़े या ना बढ़े, दैट इज अनदर मैटर, बट यूज करना है, तो यूज करोगे तो अच्छा है। सो इंडिया कहाँ था? 6th नंबर पे। अरे ये मॉर्निंग में आई हैव चेक्ड इट, ये 8वें नंबर पे था। गुड, it shows the population,
नंबर ऑफ राइटर्स, आज कितनी खुशियां आई हैं। ऑल राइट, सो ये चीजें आप चेक कर सकते हो इस पे। अरे अभी एआई हम ही बना रहे हैं, चिंता मत करो। कौन सा? हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिश्ड हैं उनको साइट किया गया है, वो डॉक्यूमेंट्स हैं। जो रेफरेंसेस आप कह सकते हो, इतने नंबर ऑफ रेफरेंसेस को साइट किया है। आपने अपने पेपर में 30 रेफरेंसेस दिए, तो वो आपके पेपर के 30 हो गए, और ऐसे इतने डॉक्यूमेंट्स के वो सबके काउंट करके इतने साइटेबल डॉक्यूमेंट्स हुए, वो शो कर रहा है। तो ये शो करता है कि अब देखो इंडिया में इतने नंबर ऑफ साइटेशंस आते हैं। यू कैन मेक अ स्टडी कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा साइटेशंस लोग प्रेफर करते हैं, या ये कल्चर है, किस कंट्री में कल्चर ही नहीं है, मतलब इससे ये पता लगा सकते हैं। सो इट्स अबाउट जर्नल मैट्रिसेस। we know this Q1, Q2, Q3, Q4 क्लियर है। Q1 मीन्स क्वालिटी नंबर 1 है, और Q4 मीन्स क्वालिटी 4 है, बट वेब ऑफ साइंस और स्कोपस में इंडेक्स्ड है, और इट इज क्वालिटेटिव जर्नल, तो Q4 में जाने में भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, स्कोपस में, स्कोपस में। तो इससे आपको ये आइडिया आ जाएगा कि ये क्वालिटी जर्नल से मैं पब्लिश जरूर करा सकती हूँ। बट उसके बाहर जाओगे, जो साई मागो जर्नल रैंकिंग है, उसमें ऐसे भी आपको जर्नल आ सकते हैं जो इनमें ना हो। चेक इट। तो बस, तो फिर कोई चांस नहीं, फिर ठीक है, गुड, गो फॉर इट। नेक्स्ट आता है आपका ये 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर हो गया, एक हो गया 2 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर। वो हम आगे देखेंगे कि कौन से फार्मूले हैं, वो कैसे निकलते हैं। एंड देन साइड स्कोर हो गया, जो किससे होता है, साइड स्कोर फोकस से होता है, और इम्पैक्ट फैक्टर वेब ऑफ साइंस। तो ये जर्नल का मैट्रिक्स है किसी एक जर्नल का, और वो उसका मैंने ये शो किया है कि ये सारी चीजें एक जर्नल की आपको देखना चाहिए बिफोर चूजिंग अ जर्नल। ये बेस्ट थिंग इज 27% एक्सेप्टेंस रेट। ये हमेशा देखना आप, एक्सेप्टेंस रेट कितना है, 13 है, 49 है, 62 है। जितना हाई होगा उतने आपके चांसेस ज्यादा हैं, बट उससे ये भी पता चलता है कि वो सबके आ जाओ, तो उसमें क्वालिटी का थोड़ा डाउन हो सकता है, बट वो चीज आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो। इम्पैक्ट फैक्टर 9 है और 65% एक्सेप्टेंस है, आन दो, हम हम करेंगे। और फिर ये है ये वाला जो टाइम 13 डेज। फर्स्ट जो आपने, आप बड़े जल्दी में है, प्रमोशन चाहिए आपको, और 2 ही हफ्ते बचे हैं, कैसे ही पब्लिश हो जाए, तो 13 डेज में ये आपको ये बता देगा कि ये पब्लिश होगा या नहीं होगा। मीन्स एटलीस्ट फर्स्ट रिप्लाई आएगा, टेस्ट रिजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। फिर इट विल सेंड इट फॉर दी रिव्यू, कि आपका पेपर रिव्यू पे चला गया, ये 13 डेज बाद आपको ईमेल आएगी। देन वो 47 डेज देंगे रिव्यूअर्स, और फिर 18 दिन में पब्लिश। 18 days एवरेज फ्रॉम एक्सेप्टेंस टू ऑनलाइन पब्लिकेशन, मतलब पब्लिश होने का, आपका एक्सेप्टेंस होने के बाद। हाँ ठीक है, तो ये क्लैरिवेट एनालिटिक्स पब्लिशेस दी इम्पैक्ट फैक्टर, और इसको इंग्लिश में ना पढ़ते हुए हम फार्मूले पे आते हैं। 2020 में एक जर्नल था
उसके साइटेशन मिले 2 years में 18 और 19। फॉर एग्जाम्पल देर इज वन जर्नल जो जिसका 2 साल का आपको साइटेशन इम्पैक्ट फैक्टर निकालना, तो लास्ट के 2 years का इम्पैक्ट फैक्टर निकलेगा। अभी 25 है, तो 24 एंड 23 का क्या आपको चाहिए साइटेशन। 2 साल का साइटेशन मीन्स कितने लोगों ने उस जर्नल को साइट किया, सारे जोड़ने हैं वो। एंड पब्लिश पेपर्स, कितने पेपर पब्लिश हुए। मान लो यहाँ पे इसमें कह रहा है 1050 साइटेशन आए 2019 में और 1100 आए 2018 में। तो इसको आपने क्या किया, डिवाइड बाई 250। इस साल में अगर 4 इश्यू छपे तो 4 इंटू जितना भी नंबर है, ये 250 इन दोनों को जब आपने डिवाइड किया, इसको प्लस करके डिवाइड करेंगे, देन 4.3 इम्पैक्ट फैक्टर 2 साल का 4.3। और ये कौन से जर्नल का है, जो वेब ऑफ साइंस ने इंडेक्स कर रखा है, उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर है। क्लियर है। तो क्या याद रखना है, ये याद रखना है साइटेशंस डिवाइड बाय डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड। इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। 2018 में 2019 में एक जर्नल है और उसका नंबर ऑफ आर्टिकल्स 30 पब्लिश होते हैं और 2019 में 40 पब्लिश हुए थे और इसमें ओवरऑल साइटेशंस 59 A + B बाय M1 + N। वही चीज जो पहले मैंने 2 इम्पैक्ट फैक्टर आया इससे। तो इम्पैक्ट फैक्टर आप किसी भी जर्नल का निकाल लोगे जो वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड होगा, उसी का इम्पैक्ट फैक्टर निकलेगा। आपको अगर कल एक मेल आती है इम्पैक्ट फैक्टर 9.5, just go and submit your paper, we will publish it within 21 days। वो क्या है, प्रेडेटरी जर्नल है, ठीक है, भाषा में मत आना कभी। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा कुछ पैसे लेगा 1500, उसके बाद पब्लिश किया जाएगा 15,000 और 1 वीक ऑनलाइन आएगा वो 9.5। एक हफ्ते बाद वो देख ही गायब हो जाएगा। मेरा पेपर कहाँ गया, वो आपके 20,000 ले गए। तो ये कैसे बचोगे, टाइम आगो जर्नल रैंकिंग और जर्नल फाइंडर हर पब्लिशर के होते हैं, एल्सेवियर, स्प्रिंगर, सेज। और तीसरा स्कोपस इंडेक्स, स्कोपस की साइट पे जाओ, अपना जर्नल चेक करो, सेम बिस्लरी और बिस्लरी वो एल आगे लगा के वो सब करते हैं, यहाँ उससे बचना है। साइट स्कोर कौन प्रोवाइड करता है, स्कोपस। स्कोपस पीयर रिव्यू जर्नल्स, बुक सीरीज, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स और ट्रेड जर्नल्स के लिए साइट स्कोर प्रोवाइड किया जाता है। It measures the average citations received per document published in an article। इसको भी इस तरीके से समझते हैं। साइट स्कोर 2020 का एक जर्नल का क्या हुआ, 2019 20 21 22, तो 22 का निकाल रहे हैं 4 years का, तो भी मिला लिया और इतने डॉक्यूमेंट पब्लिश हुए और इतने साइटेशन हुए, दोनों को डिवाइड किया 4.9 साइट स्कोर आ गया। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्या इम्पैक्ट फैक्टर 2 years का था, उसमें 2 years के साइटेशन डिवाइड बाय डॉक्यूमेंट पब्लिश, साइट स्कोर में 4 years के साइटेशंस डिवाइड बाय डॉक्यूमेंट पब्लिश। तो ये बताएंगे, एक ही जर्नल है,
एक जर्नल था उसकी 2 साल में, जैसे आप अगर फैकल्टी हैं तो आपने 2 साल में कैसी टीचिंग परफॉर्मेंस दी, वो आपको एक अप्रेजल देंगे। एक 5 साल बाद आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही लगातार 5 सालों में, वो देंगे। तो वैसे ही एक जर्नल की परफॉर्मेंस 2 साल में कैसी रही और 5 ईयर्स में कैसी रही। 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर और 2 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर। 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा वैल्यू रखता है क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी दिखती है। ये है एक स्कोपस की स्लाइड। यहाँ देखो, जैसे ये मैंने साइड स्कोर यहाँ से लिया था, सेम चीज। फिर साइड स्कोर ट्रैकर, ये क्या कह रहा है, अब तक ये सिर्फ 4 साल का था, लेकिन ये ट्रैकर कह रहा है कि हाँ इस साल में 2023 में इतने साइटेशंस आए और इतने डॉक्यूमेंट पब्लिश हुए। तो वो ट्रैक कर रहा है कि अब इतना हुआ, अब इतना हुआ, अब इतना हुआ। ठीक है। अब ये रैंक की परसेंटाइल 53 जर्नल्स हैं जो कि फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में हैं। इंडेक्स स्कोपस इंडेक्स करता है, उसमें 14th नंबर पे आता है ये रेडिएशन जर्नल। ये जर्नल रैंकिंग दे रहा है। और ये परसेंटाइल 74। फिर है यहाँ आ जाते हैं, ये पूरी फैमिली है। साइड स्कोर क्लियर हो गया, जैसे इफेक्ट फैक्टर वैसे साइड स्कोर, 4 साल के साइटेशंस डिवाइड बाय डॉक्यूमेंट पब्लिश। साइड स्कोर ट्रैकर, वो पूरा साल का ट्रैक करता रहेगा कितना साइड स्कोर है। देन साइड स्कोर परसेंटाइल, कितना परसेंटेज, ये देखो ये 74 है। ये सब स्कोपस बना के देता है, बट आपको कंपेयर करना हो किसी जर्नल के साथ। आपने 5 इंटरनेशनल जर्नल सेलेक्ट किए, उन 5 में से कौन बेस्ट है, तो ये सारे पैरामीटर्स आपको 10 करके उठा सकते हैं। ये क्वालिटाइन हो गया, क्वालिटी 1, क्वालिटी 2, क्वालिटी 3, क्वालिटी 4। ये कौन सी क्वालिटी में वो आता है, जैसे यहाँ पर नहीं लिखा है इन्होंने, बट यहाँ पे आता है Q1 है या Q2 है। साइड स्कोर रैंक ये रहा। उसके बाद साइटेशन काउंट, कितना साइटेशन काउंट है डॉक्यूमेंट पब्लिश साइटेड, ठीक है, उनकी क्या परसेंटेज है। क्वालिटी को डिनोट कर रहा है या फिर तो टॉप 25% ऑफ द जर्नल। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे 100 जर्नल्स हैं आपके फिजिक्स के, हाँ तो Q1 है, फिर 25 से 50, फिर 75, फिर 100। तो जो 100 वाला है वो भी अच्छा है क्योंकि वो इंडेक्स्ड है उसको आपस में, तो उसमें भी पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन आपकी क्वालिटी रिसर्च है तो 1-2 बार आप फेल हो जाओ कोई बात नहीं, माइनर रिवीजन, मेजर रिवीजन कोई बात नहीं, लेकिन आप Q1 में भी पब्लिश कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली एक रिसर्च स्कॉलर थी हमारे यूनिवर्सिटी की, तो 2-3 बार पेपर मुझे भी दिखाया था उसने, तो 21 इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश हुआ और 3 बार मेजर रिविजन हुए। कोई बात नहीं, बट कितनी बड़ी सक्सेस है। वो असिस्टेंट प्रोफेसर तो पक्का है, बट मेहनत की है 3 साल के PhD में। वो एक पेपर छपा लेकिन 21 का छपा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज है, सेम जर्नल है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, साइमागो जर्नल रैंकिंग, ठीक है। ये रहा वो सेम स्लाइड, ये कंट्री रैंकिंग। SCR ऐसे भी शो करता है किसी जर्नल का, जैसे हम अभी देख रहे थे नीचे जो ग्राफ्स थे बहुत सारे, तो उनमें से एक ये है 2018, 19, 20, 21, 23, 22 में ऐसे ऐसे इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इसका ये पैटर्न शो करता है। SNIP ये बहुत कम यूज होने वाला परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, जिसको लोग भूल भी गए हैं, बट स्कोपस ने एक कैटेगरी बनाई है SNIP। क्या है ये? सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट
पर पेपर। मान लो आपने 90 पेपर्स पब्लिश किए, साइटेशंस 2000 ही हैं, बट आपका एक पेपर ऐसा था जिसमें 1500 साइटेशन है, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? जैसे जस्ट जो रिसर्च स्कॉलर जिसकी एक पेपर 21 इम्पैक्ट फैक्टर वाली थी, तो उसका SNIP बहुत हाई होगा। तो वो वैल्यू देने के लिए ये इंडिकेटर बनाया है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ साइटेशंस of 3 years divided by number of document published in a particular journal। ये यूज में नहीं है, इसलिए मैं भी इसको ठीक से 3 साल के लिए। ये एक्चुअली ऐसा है ना, वेब ऑफ साइंस के साथ टक्कर करना चाहते हैं, और जो भी वहां हुआ है वो यहाँ पे भी होना चाहिए। हाँ जी, कहीं कमी ना हो। नहीं, वो 3 years है, 3 years। अब आते हैं एच इंडेक्स पे, खुद पे हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तो जर्नल कर रहा था, राइट, पब्लिशर्स की बात हो रही थी सारी, हम सिर्फ उसमें तो ये कर रहे थे, चूज कर रहे थे दिस इज बेस्ट जर्नल। अब अपने आप अपने ऊपर आते हैं, एक इंस्टीट्यूशन पे एच इंडेक्स एक ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, एच इंडेक्स एक ऑथर का हो सकता है, एक राइटर का हो सकता है। हाउ टू कैलकुलेट, ये है पब्लिकेशन। आप में से कोई भी हो जाओ, आप जैसे हो गए, आपने 12 पेपर्स पब्लिश किए, इनके साइटेशन इस हिसाब से मिले। अब आपका जो 11 पेपर था उसमें 9 साइटेशन मिले, आपके जो 5th पेपर था उसमें 2 मिले, लेकिन एक ऐसा पेपर था जिसमें 6th वाला जो पेपर पब्लिश हुआ उसमें 29 साइटेशन मिले, मीन्स ये सबसे बढ़िया पेपर था। हम क्या करेंगे, रैंकिंग करेंगे, साइटेशंस सबसे ऊपर लिखते जाएंगे, जो सबसे ज्यादा साइटेशंस, सारा खेल साइटेशंस का है, जितने अच्छे लाइक्स उतना अच्छा फोटो, राइट, वही बात यहाँ पे है। ये हो गए पब्लिकेशंस। पब्लिकेशन जैसे 29 P6 था तो मैंने P6 यहाँ पे लिख लिया, एंड जैसे नेक्स्ट है 26 P1, तो ये P1 आ गया। इस हिसाब से मैंने रैंकिंग कर दी, कर सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट है एच इंडेक्स कंपैरिजन। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, अब आप ये बताओ इसका एच इंडेक्स कितना होगा? कैसे पता लगा? एक पेपर में इनको मिनिमम ले चाहिए। हाँ, यहाँ देखते हैं 29, 1, 29, 2, 26, 3, 15, 4, 14, 5, 12, 6, 11, 7, 11, 8, 9, 9, 7। यहाँ गाड़ी रुक गई, क्यों? क्योंकि ये इससे कम है, ये या तो बराबर हो या ऊपर हो, उतना ही माना जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या होगा? 8। तो रैंक होता है वो माना जाता है। हाँ, एच एच इंडेक्स होगा 8, 8 एच इंडेक्स होगा। और अगर यहाँ पर भी 9 में यहाँ 9 आ जाता तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर 9 होगा। जैसे ही कम होगा, अगर ये यहाँ पे ही कम हो जाता तो फिर ये 2 ही एच इंडेक्स होता है। इसलिए क्वालिटी ये बताता है, अच्छे पेपर भी लिखना जरूरी है। 20 लिखने से काम नहीं चलेगा, 50 लिखने से काम नहीं चलेगा। क्वालिटी, और क्वालिटी कहाँ से आती है? साइटेशन से। भेजो सभी को, देखो हमारा पेपर, पढ़ो, साइट करो, मार्केटिंग। एच इंडेक्स कंपैरिजन, यहाँ 3 ऑथर्स आ जाते हैं, इनकी रैंकिंग है, इनके साइटेशंस है, इनकी रैंकिंग है, इनके साइटेशंस है, इनकी रैंकिंग है, इनके साइटेशंस है। नाउ 1 का 11 हो गया, 2 का 7 हो गया। अब आप बताओ इसमें कितना इम्पैक्ट फैक्टर है? पहले वाला
हाँ हाँ एच इंडेक्स, सॉरी एच इंडेक्स। इसमें पहले ए ऑथर में आप ए ऑथर, इसमें एच इंडेक्स कितना है आपका? आपके 8 पेपर है और ये आपके साइटेशन मिलेंगे। हाँ 6 कैसे हुआ देखो, एक में या तो एक हो या एक से ज्यादा हो तो 11 है, दो में दो हो या दो से ज्यादा हो, तीन है तीन से ज्यादा हो, चार है चार से ज्यादा हो, पांच है पांच से ज्यादा हो, छह है छह हो या ज्यादा हो, सात है सात हो या सात से ज्यादा हो। हाँ बताओ तो छह, छह इम्पैक्ट फैक्टर ना एच इंडेक्स हो। क्या क्या फिर से बोल रैंकिंग करोगे सारे को, रैंकिंग करना पहले तो वो लास्ट मंथ का हो सकता है। ये जा रहे हैं सभी में जा रहे हैं, ठीक है इधर 5 है तो इसमें 5 हो जाएगा। अब ये 4 पेपर, ये 3 पेपर इनके खराब है, इन्होंने और फिर ये सी वाले में ये देखो ये कितना टॉप क्लास जर्नल है, मतलब पेपर है, बट उससे क्या फर्क पड़ता है, ये 5 नंबर में इनका 5 ही रहा और इनका 6 हो गया जबकि 11 ही था। देखो आप कंपैरिजन देखो, ये 11 है और ये 220 साइटेशन, इतनी मेहनत की मार्केटिंग की, लेकिन कितनों में थी 4-5 पेपर ही हुए। इन्होंने कंसिस्टेंसी रखी, क्वालिटी वाले पेपर ही 11 लोगों को ही सेट कर रखा। क्या हाँ ये यही तो हो रहा है। हाँ अब है I10 इंडेक्स। I10 इंडेक्स मीन्स वही काम करना है, ये पेपर्स है और ये नंबर ऑफ साइटेशन है। 10 टाइम्स कब तक आता है, 10 टाइम्स साइटेशंस, 10 साइटेशन तो कम से कम हो, पहले में दूसरे में तीसरे में चौथे में पांचवें छठे में, यहाँ सातवें में 8 है, मीन्स 10 से नीचे। इनका I10 इंडेक्स कितना हुआ 6। I10 इंडेक्स यहाँ पे भी ये शो कर रहा है। ये एक ऑथर था, उसकी रैंकिंग की, हमने साइटेशन हो गए, ये पब्लिकेशन हो गए और फिर हमने क्या किया 10 10 10 10 10 10 10, ये 9 हो गए, यहाँ रुके 7 I10 इंडेक्स। लेकिन इसका H इंडेक्स कितना है 8, इसलिए 9 के बाद 7। तो ऐसे आप निकाल सकते हो अपना। ये वापस, ये क्लियर हो गया ना, ये जी इंडेक्स है। ये है जी स्क्वायर साइटेशन, जी स्क्वायर साइटेशन, 2 पेपर आए 2 का स्क्वायर 4 साइटेशन आने चाहिए। आपके 10 पेपर हैं, 10 का स्क्वायर 2 साइटेशन होना चाहिए, तब आपका जी इंडेक्स क्लियर होगा। तो ये थोड़ा क्वालिटी के ऊपर था। ये आर्टिकल लेवल मैट्रिक्स है, हमने हाँ ये चीज पहले डिस्कस कर ली है। अल्ट मैट्रिक्स है, अल्ट मैट्रिक्स फॉर सोशल मीडिया एंड मास मीडिया। जितने भी आपके सोशल साइट्स हैं उनमें जब आप शेयर करते हो, डाउनलोड व्यू लाइक्स कमेंट्स जो भी आते हैं वो अल्ट मैट्रिक्स आपको बताता है। हाँ ये मैं आपको रिवाइज कराता हूँ सारी चीजें। इम्पैक्ट फैक्टर वेब ऑफ साइंस है, एंड देन 2 ईयर एंड 5 ईयर है, फ्री है। साइट स्कोर फोकस का है, 4 ईयर्स का है एंड फ्री है। SNIP फोकस का है, 3 ईयर्स है, फ्री है। SJR
स्कोपस का है 3 years एंड फ्री। गूगल स्कॉलर ये दोनों चीज होती है, फ्री है। अब मैं आपको वो एक बार समय हो गया, 2 मिनट तो है। ये आपने देखा है IRINS, इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे एक ऑथर है, ये मैं मैनेज करता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की। इट्स फैकल्टी प्रोफाइल्स ऑफ ऑल टीचर। हाँ, ये अब हमारे काम की चीजें आ गई। These are the publications, open access, world open access and closed access subscription. Citations इनके इस author के कितने हैं? 6261 H index 37 है and these are the cross reference citations. अब ये गूगल प्लस, ये फेसबुक, ये अर्थ मैट्रिक्स है, ये जो हम बात कर रहे थे इस ऑथर का अर्थ मैट्रिक्स। ये देखो अब इनकी मार्केटिंग, फेसबुक पे जो प्रोफाइल है उसमें 46 मिले उनको। एक्स जो प्लेटफॉर्म है, जो ट्विटर को चेंज किया ना एक्स में, हाँ, तो 121 है। ये मेंडले, मेंडले पे जो रेफरेंस मैनेजर है उस पे जितने भी पेपर इन्होंने साइट किए हैं वो देखो 1572, कितना फायदा हो गया। एंड देन गूगल प्लस, ये क्या है, ये दिखाएगा नहीं। अब गूगल स्कॉलर, गूगल स्कॉलर साइटेशंस ये आपके भी शो करेगा। घर जाते ही प्रोफाइल बनाओगे, इट विल शो यू योर साइटेशंस, योर एच इंडेक्स एंड आई10 इंडेक्स, तीनों बने बनाए, फार्मूले नहीं लगाने, गूगल विल डू इट। और ये इस ऑथर का नेटवर्क है, ठीक है। क्या हाउ बताओ, गुड क्वेश्चन। उनको गूगल स्कॉलर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फोकस प्रोफाइल ही अपडेट नहीं कर रखी, इज बिजी इन राइटिंग। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी प्रोफाइल्स को अपडेट करते रहें। गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल ऑटोमेटिकली अपडेट होगी, वेब ऑफ साइंस की अपडेट होगी, बट इसमें गूगल स्कॉलर में स्कोपस और वेब ऑफ साइंस को इंपोर्ट करना पड़ता है टाइमली, हर 3 महीने में, तब जाके आपके जितने भी पेपर्स हैं वो सारे इसमें इंपोर्ट हो जाएंगे और वो सारे फिगर्स दिखाएंगे। और अगर आप रिव्यूअर हैं देन पाम PALM, पाम एक वेबसाइट है, उस पे आपके सारे रिव्यूज मीन्स आपके वो परफॉर्मेंस दिखती है, कितना अच्छा रिव्यूअर। स्कोपस दिखाने का टाइम नहीं है, वैसे जितने भी स्क्रीनशॉट्स थे वो स्कोपस के ही थे, और मेनली वी यूज स्कोपस फॉर लिटरेचर रिव्यू। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में है स्कोपस का एक्सेस, बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी बात है। उसमें कोई डाउट है क्या? इट्स अ सिंपल साइट, सिंपल सर्च बॉक्स, और उसमें ऑथर एज अपने आप को आप ढूंढो, नाम से, इंस्टीट्यूशन से, एफिलिएशन से, एंड इफ यू आर देयर गुड। और अब कितने पेपर आपके पब्लिश हुए, कितने साइटेशन आए, सारा सब कुछ शो करेगा।
वैसे ही वेब ऑफ साइंस पे आप सर्च करो। इस फॉर एग्जांपल मोस्टली इसको हम यूज कहाँ करते हैं? फॉर एग्जांपल इस कॉलेज में कितने पब्लिशर्स हैं, कितने ऑथर्स हैं, और वो उनके कितने पेपर्स हैं, किस किस ईयर में, वो पूरी एक्सेल सीट डाउनलोड हो जाती है। वो नेट के टाइम, NIRF के टाइम, उस टाइम मोस्टली हम फोकस को यूज करते हैं। अदरवाइज स्कॉलर्स किसके लिए यूज कर सकते हैं? लिटरेचर रिव्यू करने के लिए। हाँ, ये बेस्ट। सर्च बेस्ट या हाँ सर्च बेस्ट होगा वो। AI है, 100 डेटाबेसेस हैं, 100 डेटाबेसेस हैं, ओपन एक्सेस एज वेल एज सब्सक्राइब। आपका सब्जेक्ट का रिलेटेड या टॉपिक के रिलेटेड किस किस डेटाबेस में कितने आर्टिकल्स हैं वो बता देंगे। सर्च बेस्ट, सर्च बेस्ट करके देखना आएगा। हाँ हाँ, सर्च बेस्ट, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आपके पास स्कोपस नहीं है तब भी काम चल जाएगा। हाँ, मीन्स आपको फिर यू नो द होल वर्ल्ड, कौन से डेटाबेस में क्या है। आई एम फॉरगेटिंग दिस, बट बेस्ट सर्च या सर्च बेस्ट ऐसे करके वो है। डेटाबेसेस 100 डेटाबेस, लिस्ट ऑफ 100 डेटाबेस, और डेटाबेस ऑफ 100 डेटाबेस ऐसे करके AI का टूल है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ABDC जर्नल्स की रैंकिंग होती है, इंडेक्सिंग होता है आपकी मैनेजमेंट जर्नल का। हाँ जैसे, हाँ जैसे हमारे लाइब्रेरी साइंस में है वीसा, वैसे ही ये तो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है जो तीनों मैंने बताए इंडेक्सिंग डेटाबेसेस टॉप लेवल पे हैं। बट सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स, वीसा, फिर प्रोक्योर्स का डेटाबेस है वो इंडेक्स करता है, फिर आपका ABDC जर्नल्स है। तो वो लिस्ट ऑफ जर्नल्स है, क्वालिटी जर्नल्स है ओवर स्पेसिफिक फील्ड। हाँ हाँ, बट इमराल्ड में जो जर्नल्स हैं वो सारे ABDC जर्नल हैं, इतना मैं जानता। ठीक है, एनी क्वेश्चन? आना सफल हुआ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। So let us thank Professor Naresh Kumar for his exciting and enriching lecture. Thank you, sir. So now we are ending this session. The tea is outside, so we can have our tea and then we can leave for the home. Thank you. Tomorrow we will have breakfast at 9:30 and then session will start at 9:50. Okay. Thank you, everyone. Participate करने का? हाँ। सर PPT आप मेल कर देंगे या मैं कॉपी करवा दूँ? कॉपी कर दूँ? Thank you, sir.
Fine. 893. आप लोग समझ तो सकते हैं विद्वान के लिए बनवाएंगे क्या आईडी नहीं समझ समझ जैसे पेमेंट वगैरह जो है वो समझ नहीं नहीं कार्ड सकते हैं अपलोड